Hey guys, good evening. I hope I'm pretty much audible as well as visible. Okay, cool. Looks like I'm pretty much audible. Great. So I welcome you all in our today's discussion. So we'll be talking about the Leetcode Premium Questions on SQL. So that's what we were doing for past couple of sessions, right? So again, in this live session today, we again will be solving some of the premium questions on Leetcode. So that's again part of our practice set, right? And again, why exactly this is important? Because many a times I've observed that whenever you go for the interviews in any of the organization, right, and if there is a sequel round, and definitely you can definitely expect the similar set of question. I won't say the exact same. I mean that is too optimistic to expect, right? But again, this is a very standard set of questions, right? So you can expect in any sort of interviews or any competitive programming you're going for SQL, right? So very standard problems, guys. So here. We can definitely look for the medium and the easy level questions. Hard level, if you're still not able to solve, I mean, anyway, we are solving it in our classes. But if you are not able to understand that, so do not get confused by that, okay? So it's totally fine. So start with, whenever you're starting your career, I mean, it's okay to have the basic set of questions like the easy and the medium ones solved at least, right? So that's what I mean. We'll be solving those questions to the, I mean, we'll try to break it up as simpler as possible and try to solve it. So that's will be our agenda, right? And we'll be taking up again the set of premium questions available on SQL for the lead code, right? So that's what we'll be doing today. Cool. So as always, I'm monitoring my chat, guys. Please reach out to me. So drop your text. So Stanley, thank you so much for confirming it's audible. Thank you so much. And again, it's pretty much live, guys. So do feel free to reach out on the chat. I'm monitoring my chat. If anybody has any concerns, anything regarding job, career, data science, SQL, Python, do let me know, guys. So let's talk and let's make this class interactive, right? So quick round of introduction. So I'm a senior data scientist myself. My name is Arpit Jain, and I have almost 9 years of industry experience into multiple domains, be it telecommunication, manufacturing, automobile, finance. I've been into multiple sectors, and post that, I'm also a motivational speaker. So I take industry session. I talk to students regarding their career, jobs. So feel free to reach out to me with your open questions, guys. So you can always talk. So let's make it interactive. Subjects: Python, SQL, data science. So today we'll be talking about SQL. So you know that. So we'll be talking, taking the live questions on the premium set from the SQL lead code, right? But before that, guys, quick promotion. So you know you have a code Python 10 on your screen. So if you're going to use that, you're going to get a free bonus sample test paper for Relevel. So what is that? So many times candidates do miss out on the great opportunities due to multiple reasons. Could be because of the poor degree they have, or also the poor networking, right? So they don't have the right set of degrees from the tier A universities, and also the resumes with which they are applying, it's not standing out from the 100 other applicants for the same job. Could be resume issues in the keywords or something else. And also you're applying to a number of jobs, still not getting even a single interview call. Very practical problem, guys, so do not worry. So this is where Relevel has been introduced by Unacademy, which is India's first test hiring platform by Unacademy, helping you to get your dream job, right? So here you're purely dependent on your skills and talent, nothing on any sort of degree or people networking. So if you're skilled enough, knowledgeable enough, you should be getting your job, right? So how does it work, guys? It's more of an assessment platform where you will be asked to go through an examination kind of a thing. So and the expectation from you would be to get the best score, right? So the only expectation here to get the best score out of this assessment, and I mean definitely if you're skilled enough, you should be getting the score, right? And now this score will be shared internally with the tie-up companies, and there are many of such companies, and they will be eventually calling you up based on your scores, right? So that's how plain simple it is. Cool. Certain other benefits if you participate here, like at least 50 plus companies, including the top startups and the unicorns, they hire directly from this platform. I was my ENY, Upgrad, Cred, Razorpay, Urban Company, many such good companies, guys. And at least 1,000 plus open job positions right now across 3 different portfolios, including your business development, front end and the back end development. Also, this is completely online. You are not going anywhere to be part of this test. Completely free, you know that. So you're not paying even a single penny to be part of this test. Yeah, the only expectation is you have to finish the entire test in a single day, and that date could be of your choice, right? And the best part is, I mean, yes, so I mean, it's an assessment anyway. So you have to score 70% of marks to make your A-level profile. It's a bare minimum requirement. But if you're not able to get it, no, do not worry. You can always reattempt it after 30 days. Again, if you're top scorer, you can get some awards, including MacBook, iPhone, and all that.
So with this, you are in a unique position, guys, to invite interest from companies instead of hunting for your own opportunities. It's more like once you have given the test, sit back and relax. The companies will reach out to you. Cool. Registration is also quite easy. Go to the link in the YouTube description, guys. I'll ask you to choose the test, business, front end, and the back end development. You can see the roles yourself. Then you would be choosing the date of your test. So when you are physically and mentally available, so slots are limited. I would suggest you to book it fast. Last would be to fill up your demographics like the full name, email ID, birth year, state, and the gender, along with the promo code option. So here you can put the promo code Python 10. So if you're going to use the code Python 10 here, you're going to unlock yourself a bonus sample test paper. It's pretty simple. So if you use the code Python 10 at the right place, that's how the tab should look like. So you have a practice tab, and you can see the sample paper here. You can download the sample paper and just be prepared with your actual test, right? So this will contain the replica questions you have. So guys, do register for the platform today. At least anyway, it's free of cost. So if you're looking for a job, if you're actively looking for a job, at least it's worth a try, right? So you can definitely try it for once. That's definitely my recommendation from for you, right? So we have an official Telegram channel as well. Again, this link in there in the YouTube description, guys. So do join this channel. So definitely that's going to help you out. So with this, guys, the bare minimum expectation from my side is to at least like and share the video. So if you feel that you're getting benefited, please like and share the video. So I mean, that's because everybody is spending some time, some energy on top of this, right? So respect that and at least like and share the video. That's the bare minimum I can expect, right? So with this, we are into our content slide talking about my SQL Leetcode Premium Series. So it's a different playlist altogether. So we're talking about the Leetcode Premium Questions of SQL practice, right? So let's quickly jump to our SQL series on Leetcode. Meanwhile, guys, anybody has any questions from whatsoever we have discussed so far? Let's pull up Leetcode. Just a minute. I hope my screen is visible to you guys. Cool. So anybody has any questions from whatsoever we have discussed so far till date on Leetcode or SQL or anything? So we have solved quite good amount of questions, right, till date on the premium series, right? So these all are premium questions to me. You can see that. So these are unlocked ones for us right now. So we have been solving these questions. Guys, again, I'm telling you, these are very standard problems, very, very standard problems. So whenever if you're going for any set of interviews or anywhere where you expected to go for a SQL round or test, right? This is very, very good place to practice your questions, guys. I'm still repeating it. And trust me, the premium questions are very standard. You can always expect similar questions in any of your coding rounds or interview rounds, wherever you're applying for the jobs, right? Very standard problems. And even for your own practice, this is very, very good questions, very standard questions. Cool. So with this, let's start. Let's take the first question for the day. Guys, again, anybody has any concerns, just yes or no. Or if you're following me, there's a thumbs up in the chat. Cool. So let's start this question. As always, we're going to follow the same practice. So now you must be seeing that I'm not writing too much of the content in inputs and outputs, because now is the time when I believe with a lot of practice, a lot of questions, the amount of questions we have solved now, you must be comfortable with these, right? So I'm not writing too much of content in inputs, outputs, the constraints in the flow, right? I'm just trying to still make it as a habit for you that in the phase of your learning process, right, you should be having this habit to write up the things, because sometimes what happens in these competitive programming questions, right? So you have a lot of English content like this. Sometimes it's very difficult to get lost in these informations, right? It's very tricky to remember to just kind of follow everything here, right? So you may get lost in the English content you have. So it's always good to write few of the important things which is part of a question in front of you. It'll save time when you troubleshoot something, because you can always expect that, it's not right the first time you might get the solutions correctly. You might not get the solution in the very first instance, right? So you might need some troubleshooting, you might get some error. So for that, if you have the content here, it'll save time, right? So that's the practice I generally follow. So you can still write like this. So if you don't have that much time, you can just write O, I, C and all that, right? So it's like more of your references. I'm writing the full thing because I want to show it to you, like how I have learned things. Cool. So I have the constraints here, and then I'll be having the flow. So and here in the flow, so we are first defining
our approach to the problem, right? That's what we're doing. Great, thank you, Nair. Thank you for joining us, Stanley. Thank you so much, Sheetal. Great, cool. So let's proceed. So we have here the table request accepted. Okay, so okay, this is again the friend request one only, right? I think we did some friend request question last time. Cool. So we have this table request accepted, and then we have the requester ID and all that. Let's just simply have this information here. So this is gonna be my data set. So I have the requester ID, I have the acceptor ID, and then I have what? I have the accept date. So all of these information is part of my table. Okay, cool. So again here requester ID and the acceptor ID is the primary key for this table. So this combined is my primary key. Okay. So look at this guy. This is a composite key, right? So we have a combination of keys which is acting as a primary key for me. So what is it called, guys? It is composite key, right? Again, it's part of my primary key only. So it's like combination of these three key would be my primary key. So basically what happens, individually these two are not the primary keys. Yes, these are the candidates keys. These can be the primary key, but in fact they are not the primary key. So to find the row uniquely, you have to take a combination of these two information. So that's what it's called as the composite key. Cool. And this table contains the ID of the user who sent the request. I think the requester ID is here, the acceptor ID, and the accept date, right? And the date when the request was accepted. Pretty simple, straightforward. Okay, so the question is write a SQL query to find the people who have the most friends and the most friends number. Okay, so write a SQL query to find the people who have the most friends and the most friends numbers. So I want SQL query to find the people who have most friends and most friends number. थोड़ा clear नहीं है, एक बार example में देख लेते हैं क्या है. Who have the most friends and the most friends number. Okay, ठीक है. I think count कुछ करना होगा, देखते हैं क्या है. The test cases are generated so that only one person has the most friends. Okay, finally. So, okay, so basically the output only one person who has the maximum number of friends. Basically, acceptor ID का count करना पड़ेगा क्या? देखते हैं क्या है. So here the thing is I have the table. So I have what is the table here? So I have the requester ID, I have the acceptor ID, and I have the accept date, right? So it's more like the first person has requested. No, okay, so acceptor ID 3 and 3. Okay, so the person with ID 3 is a friend of people 1, 2, and 4. 1, 2, and 4. कैसे? Okay, so 1 जो है, okay, 1 is friend with 3, okay, and 2 is also friend with 3, and also 3 is friend with 4, on the vice versa, right? Yeah. Okay, cool. So requester हो या acceptor हो फर्क नहीं पड़ता है, basically friends को count करना. अगर मैंने भेजा या आपने भेजा, hardly a thing, right? So it's more like combination को हमें check करना पड़ेगा. So like whether it is part of a requester ID or the acceptor ID, so combination से हमने unique key निकालनी पड़ेगी, है ना? More of that sort. So basically here you can see the ID3 is friends with this person is friend with all the 3 people. The 1, you can see 1 and 3, 2 and 3, and also 3 and 4, right? So here in this case, he got the friend request from 1 and 2, but on the other hand, for the 4, for the person 4, he sent the request, right? So it's more of like that sort. Cool, fair enough. So follow up, in the real world, multiple people could have the same most number of friends. Could you find all the people in this case? Okay, right, we can do that. So we can still find all the people in this case. So I mean, whosoever is having the highest number of the friends, right? So fair enough, cool. I don't think there is any particular constraint here, right? Doesn't look like, so it's pretty straightforward. I mean, it's just more like we have to look for a requester plus acceptor. So both cases are equally fine for to find friends. Okay, so these two conditions are both equally good. Cool. Quickly, guys. Now tell me what exactly you are thinking here. So what kind of logic you are thinking for this problem? So how can we solve this? Give me some English sentences again, guys. So you have seen the problem. You know, if anybody has having any concern to understand the problem first, let me know that. Let me clarify the question. It is very important. And if you are able to understand the question, give me some English sentences, right? How do you think we can approach this? I'm not asking you to code here,
Just give me a few English sentences. How do you think we should approach this problem? Quickly, guys. Just give me few English sentences here. How do you think we should approach this problem? Give me few English sentences. Nair, Stanley, anybody who else is part of our code chat today. Anything is fine, guys. So do not worry. I mean, it's just a plain English logical explanation of this problem. Okay. So meanwhile, you guys are thinking, let me just intervene here. So can't we say that? So ultimately, we have seen from this data, the friend could be in either ways. So the person could have himself sent the request, like it'll be part of your requester ID, right? From a data perspective, or he might have received the friend request. He might have accepted that request, right? So it could be part of the acceptor ID also, right? So there is a combination, right? So either in this case, it has to be a combination. Cool. So I have what? So I have the request accepted table here. So from where I have to find this information. Cool. Chalo, quickly. So क्या कर सकते हैं इसमें guys? Just like tell me one thing which you can think of. Right? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है? Blank. क्या हो गया यार? चलो ठीक है. Anyway, मैं समझाता हूँ. अभी हमने क्या करना है इसमें एक्सेप्टर आईडी और रिक्वेस्टर आईडी दोनों है, राइट? तो हमारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या बनता है यहाँ पे? अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस कॉम्बिनेशन, सो बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर एब्सोल्युटली ट्रू. सो इट कैन बी ईदर वेज. इट कैन बी लाइक एक्सेप्टर आईडी जो है मेरा और द रिक्वेस्टर आईडी जो है, दे हैव टू बी इक्वल, राइट? सो आई कैन से दैट इफ अगेन द सेम लॉजिक हियर. So because you can see it's pretty clearly, the concept is pretty clear here, right? So now here we want to compare the same information twice, right? So in the one time, so here what I want to compare my acceptor and the requester ID twice, right? So again, it's more of a similar information comparison twice. So again, we can do the same logic, right? We can just call the same table twice here. Can you get it? You can get this, right? So I can still call this same table very, I mean, in the same way. So here it's more like my requester ID and the acceptor ID should be equal in both the cases. So how can we do that? So in fact, let me just write a structure for you again. So how the structure follow here in SQL? It's pretty simple, right? So select from where, then you have group by, and then you have having, and then you have order by, and then you have limit. So this is your code structure, right? As always. So code structure never changes. Nair, I'm trying to explain it as simpler as possible. Again, if you do not understand it, let me know, okay? So we can still discuss it. This is the code structure of any SQL problem, okay? So this is, you have to just fill in the blanks now, okay? So this is just the structure we always follow. We've seen that, right? So now, अभी हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे, now what we can do is, this is where I want what I want. So I want the maximum number of persons. So I want the person ka ID here. So this is what the ID here. So I can just tell you the request ID basically. So I want in the select statement in the print finally I want the requester ID. So I'm just writing in a logical format. We'll see if there is any particular the suffix prefix I want to add in terms of table references and all. We'll see that later. From में क्या है? Generally we have this table here, request accepted, right? So we have the request accepted table. So to make it comparable, right? So we want to again compare the same thing. So what we can do is maybe we can still have it is more of a number references for me, right? So what can we do here? We can just simply write request accepted, for example. So just write it like this. We'll see how we can figure out this. Okay. So where just keep it still the same way. We'll see how we can do that. This is where my logical explanation would come. So logical filter would come to write the logic here. Group by I think is not needed anyway. It's not needed in this case. We have the having is not needed, and then order by, yes, we need the order by. So we need to order in based on my calculation basically. We'll see that. So how it comes. So this is where my calculation part would come, right? And limit definitely we need the maximum of the person, right? So we need only one person, right? So
what does it say? Wait, go. So yeah, so only one person has the most friends here. So ultimately, the objective here is to find the maximum person who has the maximum number of friends, right? The person who has the maximum number of friends. So limit is going to be 1 here, right? And order by calculation, so in this case, it should be descending because we want to sort it upwards down and we want to find the person who has the maximum number of friends, right? So this is what the core skeleton code looks like. Anybody has any concern in this, right? Now we'll try to take each thing one by one. Cool. So now what exactly we are looking for here? So output, what does it look like? So uh, no, here it wants find the people who has most friends and the most friends number also. So I want the number also here. So it'll be the kind of number I want. Okay, so it's like more of a number which I want. So output is ID and num, right? So num I want here. Cool, ठीक है. So this requester ID को हमने rename करना पड़ेगा as ID and this has to be num here. Cool, this is what the expected output is. ठीक है. अब इसमें कैसे कर सकते हैं? अब सिंपल बात यहाँ पे फंडा क्या है यहाँ पे? हमने क्या करना है? काउंट बेसिकली वही करना है मेरे को जहां पे आपका वो लॉजिकल कनेक्शन बन रहा है. अब मैं क्या कर सकता हूं? देखो एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको. अभी यहाँ पे मेरे को क्या लॉजिकल कंडीशन क्या है? बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं इन दिस केस में, जो मेरा रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी है ना, रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी है यहाँ पे. अगर ये मैं बोल रहा हूँ रिक्वेस्टर आईडी और एक्सेप्टर आईडी है, ये बेसिकली मेरा सेम होना चाहिए. करेक्ट, एग्री कर रहे हो इस बात को? ये दोनों सेम होगा. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ इस केस में कि मेरा उन केस में फ्रेंडशिप है ना, उस केस में फ्रेंडशिप है इसकी. अब वो कैसे मैं इसको कैसे मतलब कनेक्ट कैसे कर सकता हूँ? अब मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि दोनों 3 3 होगा, 3 4 होगा ना, बिकॉज इसमें दोनों का रेफरेंसेस अलग है. 1 and 2, 3 and 4, 2 and 3. So these are two different IDs, right? How can we infer this? वो कैसे कर सकते हैं हम? In this case, we can refer it from different table. For example, मैं क्या कर सकता हूँ? What I can do is simply write for this. I can maybe write a nested query. So for this, I can simply write a nested query or a sub query. है ना, सब क्वेरी क्या लिख सकता हूं मैं? जैसे मुझे क्या करना है, मुझे अल्टीमेटली काउंट निकालना है ना, मुझे सिंपली काउंट निकालना है. मैं लिखता हूं सेलेक्ट काउंट, सिर्फ काउंट लिखता हूं, अभी काउंट स्टार कर देता हूं, है ना. फ्रॉम व्हाट? रिक्वेस्ट नहीं, फ्रॉम मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड टेबल है ना, फ्रॉम रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड टेबल. I'll be saying this one to the side कर देता हूं, दिखाई देगा. From request accepted table where this is equal to this, है ना. अभी मैं इसको लिखता हूं अच्छे से, ठीक है. और this again in this case इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए, मतलब ये is also equal to this. Cool, ये यही मैं बोलना चाह रहा हूं. अगर मेरा दोनों कंडीशन मेरा इक्वली वैलिड है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है? एक्सेप्टर आईडी और रिक्वेस्टर आईडी जो है मेरा आपका, जैसे कि अब एक्सेप्टर आईडी और रिक्वेस्टर आईडी जो यहां पर है, ये कैसे वैलिड हो सकता है? मैं क्या करूंगा, मुझे इसको डबल रेफरेंस करना है ना, तो मैं काम करता हूं, इसको इस पूरे को एक टेबल की तरह में शो कर देता हूं. एंड इसका नाम जो है यहां पे, मैं मतलब जो मेरा कंडीशन है, इस पूरे नाम इसका कॉलम का नाम मैं नम रख देता हूं, ठीक है. अब इसको मैं रेफर कैसे करूंगा? Here what I'm saying is, ये जो मेरा टेबल है, so basically मेरा मेन टेबल है, इसको मैं काम करता हूँ A लिख देता हूँ, एंड ये जो है इसको मैं B कर देता हूँ, ठीक है, सब क्वेरी के अंदर. अब सिंपल हो गया ना. A डॉट रिक्वेस्टर आईडी शुड बी इक्वल टू B डॉट एक्सेप्टर आईडी एंड ऑल्सो B डॉट एक्सेप्टर आईडी शुड बी इक्वल टू A डॉट रिक्वेस्टर आईडी. लॉजिक समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? अब इस केस में मेरे को रिक्वेस्टर आईडी चाहिए, सो रिक्वेस्टर आईडी मेन टेबल से उठा लेते हैं. सो वी हैव a डॉट रिक्वेस्टर आईडी हियर एंड इसको हमने आईडी की तरह नेम कर दिया है एज आईडी. एंड देन वी हैव दिस कॉलम, सो जिसका नाम हमने नम रख दिया है, फ्रॉम रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड टेबल. वेयर, अब वेयर की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमने कंडीशन यहीं पे लिख दी, खत्म हो गया, तो कहानी खत्म हो गई इसकी. फ्रॉम रिक्वेस्टर एक्सेप्टेड ए, ऑर्डर बाय कैलकुलेशन. ऑर्डर बाय किस थ्रू करना होगा भाई हमें? ऑर्डर बाय इस कॉलम के थ्रू विच इज नम, राइट. सो ऑर्डर बाय num descending limit 1. Cool, clear, simple है ना? लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं?
हाय विकास। हुई ना यार, कल तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी पाइथन की। परसों नहीं हुआ था, परसों आई वाज नॉट अवेलेबल, सो वी डिड नॉट कनेक्ट। बट कल तो हमने करा था पाइथन लीड कोड। कूल कूल, थैंक यू सो मच गेमर्स अरीना। एनीबडी एल्स? कोई डाउट है यार, प्लीज यस और नो, थम्स अप, कुछ तो बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, नो प्रॉब्लम विकास, ठीक है। चलो अभी इसको क्विकली हम चेक कर लेते हैं रन करके। क्या हो गया यार? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग आंसर आ रहा है? एक बार हम देख लेते हैं क्विकली। ओके, सो इनपुट है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, रिक्वेस्टर आईडी, एक्सेप्टर आईडी, रोल थ्रू का 1 2 3, हेडर्स आईडी नाम है, वैल्यूज 32 and 33। 32 and 33 कैसे हो गया ये? ओके, कहीं ना कहीं एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, एक बार समझने की कोशिश करते हैं ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 है, 1 3 है, आई थिंक सेम सेम यही होगा ना। हाँ, 1 2 है, 1 3 है, एंड 2 3 है, एंड 3 4 है ना? सो मेरे पास थ्री, इसने थ्री आइडेंटिफाई सही करा है। सो बेसिकली जो 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 कैंडिडेट है थ्री, इसने आइडेंटिफाई सही करा है, बट इसने काउंट 2 करा है ना? काउंट इसने इसको नहीं करा है, बेसिकली इस वाले आईडी को इसने काउंट नहीं करा है ना? इसने काउंट जो है आपका ये एक्सेप्टर आईडीज वाले को करा है, जहां पे एक्सेप्टर आईडी में है। चलो अब इसको एक बार डिकोड करते हैं। प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आ रही है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिक्वेस्टर आईडी में से मेरे पास अगर मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टर आईडी, है ना? एक्सेप्टर आईडी इज इक्वल टू माई रिक्वेस्टर आईडी। एक्सेप्टर आईडी शुड बी इक्वल टू माई रिक्वेस्टर आईडी। एंड एक सेकेंड, मेरा जो है, नहीं मैं एक गलती यार, ये ए डॉट नहीं होगा यहाँ पे, बी डॉट रिक्वेस्टर आईडी शुड बी इक्वल टू ए डॉट एक्सेप्टर आईडी। समझ में आया? यस। सो बिकॉज मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, देखो मैं कंपेयर सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से कर रहा हूं। मैंने की गलती है। ओके, आई फिगर आउट द प्रॉब्लम गाइस। सो व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट केस, आई एम सेइंग take first as a reference and compare it with second, because I took a dot request id to b dot request id. In the second case I'm saying take second as a reference and then compare it with one, which is wrong. So I have to keep it as an ideal one, right? So I mean, anyway, for b, both the acceptor and the requester should be equal. You're getting it? And for a, both the acceptor and the request id again should be equal, and it both are true in the or condition. I think this is, yeah, logically this is making more sense. So let's try to run this. Okay, let's run this. Again, या लॉजिकली तो मुझे रहा है। मैं क्या कर देता हूँ, काउंट स्टार नहीं करता हूँ, फिर इसमें मैं इसको, मैं काम करता हूँ काउंट ऑफ काउंट जो है मेरा, इसका मैं फर्स्ट कॉलम को ही काउंट काउंट ऑफ फर्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे काउंट ऑफ फर्स्ट कॉलम कर देता हूँ मैं एक्चुअली। थिंक दिस शुड वर्क। ओके, नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई? चलो एक बार वापस से देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई। मेरे पास ये सही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलेक्ट ऑफ काउंट ऑफ वन। सो रिक्वेस्टर आईडी है यहाँ पे, ए डॉट रिक्वेस्टर आईडी एज आईडी, हमने यहाँ रिक्वेस्टर आईडी को लिया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, काउंट ऑफ फ्रॉम रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड बी, ठीक है, ये दिस इज फाइन, एंड आई एम सेइंग दैट वेयर this is my condition. So I'm that my requester id, so my requester id should be equal to, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, वे कर दिया मैंने। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिक्वेस्टर id should be equal to नहीं, आई थिंक ये कंडीशन थोड़ी सी गलत है, इसको वापस से फ्रेम करते हैं। आई थिंक ये यहीं पे प्रॉब्लम लग रही है मुझे। वेयर, अभी वापस इसको फ्रेम आउट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सो ट्राई टू थिंक लॉजिकली। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा सेकंड टेबल का एक्सेप्टर है शुड बी इक्वल टू माई फर्स्ट टेबल का रिक्वेस्टर, करेक्ट? बिकॉज if I'm trying to count my number of friends,
So basically मेरा second table का जो acceptor है वो first table के requester के same होना चाहिए, correct? Then मेरा matching हो गया वहाँ पे. Also और क्या होगा? In this case दोनों का जो requester है, so yeah, correct, true. Yes, I think now I figure out. So here in this case I'm saying that the जो मेरा इस केस में मेरा सबसे पहले जो acceptor है, so like this acceptor should be equal to my a dot requester. Cool. So मेरे पास जो acceptor है वो requester के equal होनी चाहिए, plus जो मेरा requester है दोनों के टेबल में सेम होना चाहिए, तभी तो मैं ये 3 वाला काउंट कर पाऊंगा केस. जब मैं 3 बोल रहा हूं तो this 3 should be equal to my requester ID, right? Cool. Yes. So I think yeah, I figured out the issue. Simple एक simple कर रहा था मैंने. It should be b dot, in this case acceptor, b dot acceptor ID, right? So b dot acceptor ID should be equal to a dot requester ID. So this is gonna be my requester ID. Cool. This is fine. So b dot acceptor ID should be equal to a dot requester ID. And now this is fine. Or then I'll be saying b dot my requester ID, and this should be my a dot requester ID, right? Yes. Yeah, this is making more logical sense. Cool. Let's check this out. I think this should be fine now. Yeah, cool. So yes, so smaller issue. So I think it's more of finding the logical connect between your questions. So we are talking about acceptor ID to be equal to my requester ID, and in both the cases it should be equal, right? So we are trying to calculate my number of friends in that sort, right? I think this is making more sense to you guys, right? Okay, so we have a question from Divya, and she says, I have solved the two-sum question month back, and now today when I wrote the same code, it is accepted, but when I submitted it is saying wrong answer. Even I checked the solution and I pasted the same question, still it is wrong. Could be some edge condition, Divya. So I'm not sure if you have seen our submission. So did you compare that? We also solved the two-sum problem. So I would request you to just check it in the video streams. You will find the solution. So we have solved it in a very simple way. We took, I think, the left pointer and the right pointer approach. So same, we defined the left and the right pointers, and we solved using that. And it was pretty much submitted from our side, right? So you can definitely check the solution. You might find your response there. Cool, guys. समझ में आया ये? थोड़ा सा, I mean, again, it's just like the way you can think of this problem, right? It's more like understand and like logical connection of a problem. I mean, again, could be some ID or I would say backend issue in that case. I mean, you can just try to maybe log out and log in. That's what I can suggest from like being an IT guy. But I mean, this is not making sense, because if it was correct last time when you submitted it, and now it is not saying that. Maybe some version issue. Check for Python 2, Python 3 you might be looking at, or maybe just try to figure out. Okay, cool. Let's submit this. I think this was a good question, but slightly trickier. But okay, I mean, we were able to solve this. Cool, guys. Let's proceed. Cool. So I think this is done. So we have solved this friend requests one. Now let's solve this the other one. So we have the consecutive available seats. Guys, again, please do talk. If you are able to understand, at least give a thumbs up. Or if you're not able to understand, tell me that you're not able to understand the question, the solution. We'll try to repeat it. So let's try to interact. Cool. So again, as always, it's going to be inputs, and then we'll be having outputs, and then we'll be having the constraints, and then we'll be having the flow. Cool. Great. Thank you, Nair. Thank you so much. Inputs, we have table as cinema, right? Seat ID is an auto increment primary key. Okay, seat ID is the seat ID. Oh my God. Arey yaar. Seat ID is the primary key for me. So is the primary key. Oh. And then free. So what is that? So for this table, each free is boolean. Free. पता नहीं.
Each row of this table indicates whether the ith seat is free or not. Okay, 1 means free while 0 means occupied. Okay, so free, like 1 and 0. Okay, so 1 is free and 0 is not free. Okay, so write a SQL query to report all the consecutive available seats in the cinema. Interesting, interesting. Okay, so SQL query to report all consecutive available seats in the cinema. So this is what I do. So consecutive seats available, or report all the consecutive available seats in this. I have to give the seat ID, yeah? Oh, right. So I have to give all the seat IDs here. So consecutive seat IDs, है ना? Cool. So return that result table ordered by seat ID. Ordered by seat ID in ascending order. So constraint क्या है? Order by seat underscore ID ascending order. Cool. So order by seat ID in ascending order. We're gonna do that, and then okay. So ordered by seat ID in ascending order, and then we have the test cases are generated so that more than 2 seats are consecutive available. Okay. So we will get some output here. So I mean more than 2 available. So we'll get some output. Okay. So the query result format is in the following example. Let's look at this. So we have the cinema table and we have the seat ID in the free. So you have 1 is free, 2 is not free, 3 is free, 4 is free, and 5 is free. Okay. So we want what? So we want the consecutive, right? So okay, we want all the consecutive available seats. So basically दोनों साथ में होने चाहिए. 3, 4, 5 है ना, साथ में available है. That's going to be my output. So seat ID को output में करना है ना. So output में क्या आएगा? Seat ID आएगा. कूल है, सिंपल है, ये तो लॉजिकल समझ में आ गया होगा, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है. हेलो आशीष, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. चलो क्विकली गाइस, गिव मी सम लॉजिकल अगेन, just anything guys, just anything, give me some logical flow, just some logical flow. कैसे कर सकते हैं इसमें? Some English sentences. I can think of 2 approaches right now, है ना. इसको सिंपल मतलब अगेन हमारे पास सेम टेबल है ना, सो मल्टीपल रेफरेंसेस ज्वाइन करके भी बना सकते हैं, है ना. सो सेम टेबल पे मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ, उस पर भी बना, ज्वाइन से भी बना सकता हूँ इसको. आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग केस स्टेटमेंट ऑल्सो, केस में भी बना सकता हूँ. आई कैन स्टिल सॉल्व इट यूजिंग केस ऑल्सो, है ना. बट अगेन guys, if you are thinking in some other direction, do let me know. So we'll try to take that approach because I want you to think loud in this, because if you're not able to think, SQL is all about thought process यार, है ना. So अगर आप क्वेश्चन को विजुलाइज नहीं कर पाओगे, अगर आप व्यू टेबल नहीं बना पाओगे ना इन योर माइंड, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसलिए आपको सोचना बहुत जरूरी है इसमें. सो डू स्पीक अप गाइस, गिव मी some approach which you are thinking, some pointers, give me some sentences, right? ये करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको उठाएंगे, वहां से लेंगे, कुछ तो बोलो, क्या कर सकते हैं? ओके, चलो मैं एक सिंपल, एक सबसे एकदम सीधा साधा अप्रोच बताता हूं इसमें, है ना. अभी केस वेस पे नहीं जाना, केस पे भी मैं आई ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग केस आल्सो, मैं वो भी दिखाता हूं आपको. बट एक सिंपल सोचते हैं. अगेन थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को कॉन्सिक्यूटिव चाहिए, है ना. मेरे पास 2 कंडीशन है. अब लॉजिकली सोचो, व्हाट ऑल कंडीशंस आई हैव. फर्स्ट आई हैव टू फिगर आउट, सो ब्रॉडली देयर 2 कंडीशंस, राइट. फ्लो क्या है, यहाँ पास 2 कंडीशंस है मेरे पास. कंडीशंस है, क्या क्या है. फर्स्ट क्या है मेरे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास, कि मेरे को कॉन्जिक्यूटिव फिगर आउट करना पड़ेगा, है ना. कॉन्जिक्यूटिव सीट, ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा. कॉन्जिक्यूटिव सीट आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा तो फ्री का कोई मतलब नहीं है. अब कॉन्जिक्यूटिव है तो सेकंड क्या है, फ्री भी होना चाहिए, फ्री 1 होना चाहिए. ये 2 लॉजिकल कंडीशंस हैं जो मुझे फिगर आउट करना है. करेक्ट, इसमें किसी को कोई डाउट है? So we need both the conditions to be equally good at the same time. So consecutive भी होना चाहिए and free भी होना चाहिए, है ना. अब consecutive कैसे कर सकते हो? अब consecutive का क्या लॉजिक हो सकता है? Just think about it again. consecutive को सिंपल कैसे सॉल्व कर सकते हो? क्या होता है डी consecutive? ये बोल सकते हैं, सपोज मेरे पास 2 नंबर consecutive कब होता है. So मेरे पास 3 है, 4 है,
है ना, ये और 5 है, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट। ये कॉन्जिक्यूटिव कैसे हैं, थोड़ा सोचो इसमें, कैसे कॉन्जिक्यूटिव है। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो इसका दोनों का सबका डिफरेंस 1 आ रहा है, ये इसलिए कॉन्जिक्यूटिव है। ये सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है। सो कॉन्जिक्यूटिव आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो, इफ here in this case if we take difference and is equal to 1, this is how we can define the consecutive seed id, I can define that, ये कर सकते हैं, है ना, सिंपल है। फ्री का तो सिंपल है ना यार, ये तो सिंपल इफ से हो जाएगा, इफ से इफ इज इक्वल टू 1, सिंपल है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, फ्री जस्ट 1 फिगर आउट करना है, राइट। ये लॉजिक समझ में आया, हमें यही इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट, हमें सिर्फ एग्जैक्टली यही इंप्लीमेंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, अब मेरे पास प्रॉब्लम, अब आप जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ 4 माइनस 3 करने के लिए या 5 माइनस 4 करने के लिए, ये डायरेक्टली तो अवेलेबल, दिस नॉट अवेलेबल डायरेक्टली बिकॉज यू कैनॉट जस्ट डायरेक्टली, आई मीन अगर आप 2 रोज को लेना चाहते हो, even if you iterate it, it's little trickier, right? So generally in this case what we do, if again there are two references here, right? So we are referring the id, the column number, the row number 1 and the row number 2 at the same time. There are two references here, right? So I have already told you, whenever there are two references for the same table, you can always call that table twice, or you can do a self join on the same table, you can do that, right? So this gives you a flexibility to call the same table twice. So क्या कर सकते हैं हम, क्या करेंगे, जो मेरे पास टेबल सिनेमा है, सो सिनेमा, ओके, सो नाउ आई एम गोना राइट द क्वेरी हियर। सो सिनेमा जो टेबल है हमारा, सिनेमा को मैं सिनेमा के साथ सिंपल सा ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये करना चाह रहा हूं मैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, सो सिनेमा, I'll be referring this as A, for example, and referring this as B. So I'll be joining this cinema A and cinema B, right? So now the question comes, what join, right? So shall I do a left join? Shall I do a right join? Shall I do an inner join? What join here, right? So this is very important question here. So how to identify and what joining to choose here? Again, look at the logic here, guys. So what I'm saying here is, for all the seat IDs, what all free, right? So it's there is no particular reference. I'm not saying that take a reference of this table first and then join the second table. So left right का फंडा नहीं है यहाँ पे. I'm not specific. I'm not giving any table a base as a reference. I want the Cartesian product. I want all the possible combinations, which is fine for me, right? So all the seat ID and the free, whichever is fine. So I want the Cartesian product because that is how I can infer the same table, right? I can call the same row twice at the same time. You getting my point? So here the ideal join process is inner. समझ में आया लॉजिक? अभी यार इससे सिंपल तो नहीं समझा सकता मैं ना, इट्स क्वाइट सिंपलर। सो अब क्या करना, ये मेरे को लॉजिक समझ में आया। अब चलो, अब सिंपल सेम स्केलेटन पे जाते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, कहाँ गया यार, ग्रुप बाय, देन वी हैव हैविंग, then we have order by, and then we have limit। यही ना कोड स्केलेटन हमारा। अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए, सीट आईडी चाहिए, राइट? तो सीट आईडी चाहिए, सेलेक्ट सीट आईडी लिख देता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट सीट आईडी, दिस इज आवर आउटपुट व्हिच आई वांट। फ्रॉम क्या चाहिए, फ्रॉम मेरे को इससे चाहिए, राइट? सो मैं इसको उठा के लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम सिनेमा ए एंड इनर जॉइन सिनेमा बी, राइट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ज्वाइनिंग करूंगा तो ऑन कंडीशन तो होगा ही ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, ऑन तो लिखना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे मेरा कंडीशन जाएगा, कूल, सो कंडीशन जाएगा। अब कंडीशन क्या है, अब फिगर आउट व्हाट द कंडीशन इज। सो दिस इज फाइन, वी नीड द वेयर कंडीशन, सो लॉजिकल फिल्टर हियर, एंड नाउ व्हाट आल्सो वी नीड, डू वी नीड ऑर्डरिंग ओके, यहाँ ऑर्डरिंग करना है ना मुझे, ये लिखा है हमने यहाँ पे, कॉन्स्टेंट में लिखा है, हाँ लिखा है हमने। सो ऑर्डर बाय सीट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में करना, सो ऑर्डर बाय सीट आईडी, है ना, लिमिट नहीं चाहिए हमें। सो ग्रुप बाय हैविंग भी नहीं चाहिए, है ना। सो नाउ वी आर डन विद दिस। सो वी हैव 4 थिंग्स टू फिल अप। सो हमने सेलेक्ट कर दिया है, फ्रॉम कर दिया है, ऑन करना बाकी। ऑन क्या हमारा सिंपल है। अब ऑन में मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पे ये कॉन्जिक्यूटिव है, मेरे को तभी ज्वाइन करना है। आई ओनली वांट टू ज्वाइन दीज टेबल्स व्हेन
the IDs are consecutive, right? So again, consecutive का logic same है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब the difference is one, right? So the difference is one here. Oh, great, Devya. That's good that you solved your problem. That's really wonderful. Cool. Okay, so let me come back. Yeah. So here what I'm saying is the condition to this is I'm saying my difference of my free seats, the difference of my seat IDs basically is what I'm saying is on what? So on the condition on my A dot seat underscore ID should be equal to B dot seat underscore, sorry, my bad, minus B dot seat underscore ID, and this should be equal to 1. Cool. कोई डाउट है इसमें? अब अगेन एक छोटा सा यहाँ पे कैच है. अब हो सकता है there could be high that this particular A table could be referred as 1, okay, and this could be referred as 2. So in this case 1 minus 2 क्या हो गया? minus 1 आ जाएगा. Correct? This is not correct. So in this case this will not be true, right? So just to avoid that odd condition, we can take an absolute over on top of this. Like for whatsoever differences is going to take, we're going to have the absolute of it and should be equal to 1, which is still pretty fair enough, right? So still the difference is 1, and I'm going to find out the exact ID here, right? So that's what I'll be having here on this. So where the logical condition here, where this is where my logical condition would be the logic. So I want to find out my seats are free. So A dot free should be equal to 1, and also B dot free should be equal to 1. Right? And this has to be both equally true. So and condition here, right? Simple. And I get ID, so I can just for my reference here. So we can just my seat ID, that to seat A dot seat ID. It will be coming from multiple places. So let's see how looks good to me. Let's try to run this and see if it is giving us the right answer. So select A dot select a seat ID, inner join, simple hai, you know? Let's try to run this. Wrong answer. Why wrong answer? Okay, so we have output as multiple. Yeah, cool. So इसमें हम क्या कर सकते हैं? Instead of taking the entire set, I just take a distinct of it. So let's take a distinct of this. You can see the outputs are repeated. Yeah, because I got the point. So because we are cross joining it, right? So we can have multiple sets of the same thing. So just take a distinct of the IDs here. Yeah, sorted. So you can see now it's pretty much sorted. Cool, great, simple है. Okay, अभी ये तो एक approach हुआ. I think I was telling you about one more approach, right? अभी इसी same question को we can still solve it in another way, guys. Because again, think about the problem. Again, we have the same logical here, right? So we can still put it under a case condition, right? So we can just find out the case condition. We can just make it more complicated. We can try to write it in terms of my casing logic. अब casing logic में कैसे कर सकते हैं इसको? Same question को मैं case के through भी solve कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? Quickly guys, give me some suggestion. कुछ सोचो. I mean कैसे कर सकते हैं? देखो अब इसमें क्या है, केसिंग के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करना है, केसिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं. हम इसको थोड़ा आई मीन इफ यू वांट आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी अ पॉइंटर गाइस. इफ यू वांट जस्ट गिव अ थम्स अप और अ yes in the chat, so I'll try to solve it with the casing also, or we can jump to the next question. Anything is fine. But again, casing से भी again there are multiple ways, multiple approaches through which we can solve the same problem, right? So casing के थ्रू भी कर सकते हैं, इसको सब क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं. I mean, it's your way of thinking on the problem. You can anyway complicate the question any way you want. So casing say we can just try to find out, like, you know, we can try to create a view table where again the this thing of my situation where the previous ID and the next IDs are similar. I mean the difference is 1, and then we can create another top query on top of that where we can write a case statement where if my the ID exists in this table,
है ना? So something like that. So we can try to complicate this again. So either way is fine. I think the logical way is pretty much right. So this is very simpler solution to this. Is anyway I think it's an easy question only, right? Yeah. So it's an easy question anyway, right? So let's not waste further time on this. We can jump to the next question. Clear, guys? Just a thumbs up if you're okay with the solution. Oh, we did not submit this, kya? Let's see if we have any edge condition here. So let's try to submit this also. Yeah, pretty simple. Okay. Cool. Let's take the next question quickly. So we have the next question, sales person. Chalo. Okay. So we'll have it again, the same thing. So we're gonna have line number 43. 43. Let me check. What was that, Swapnil? So I mean, did not clear. You did not understand that? Let me see. What is that on line number 43? This one? Oh, okay. So this is simple again. So I mean, we are the objective here is we are trying to take a difference of my seat IDs, right? So seat ID for the I mean, so the consecutive numbers is what difference should be one, right? So definitely this A and B, because we're taking a Cartesian product, right? And there could be a few scenarios where A is smaller than B. So like talking about A is 1 and B is 2, right? So because it's a Cartesian product anyway. So that's where you can always think of in a scenario where if you do 1 minus 2, it will be minus 1, right? Which is not equal to 1. Cool. But absolute of minus 1 is equal to 1, right? So just to be on and absolute of 1 is anyway 1, right? So to take those edge conditions, so we have taken absolute here, right? So that's why it is here. Cool. Let's proceed. The next question, salesperson. Cool. We have inputs, we have outputs, we have constraints, and then we're gonna have the flow. Okay. Cool. So in inputs we have table salesperson. So input is my table salesperson. Okay. So copy कर लेते हैं पूरा, है ना? ये है मेरा sales ID, name, salary, commission rate, hire date. Okay. देखते हैं क्या sales person. Okay. So sales ID is the primary key. So this is my primary key. So this is my primary key. Okay. And primary key column for this primary key column for this table. Each row of this table indicates the name and the ID of the salesperson. So name and the ID of the salesperson. So each of this table indicates the name and the ID of the salesperson. Okay, okay. Alongside their salary, commission rate, and hire date. So, okay, I mean it's more of an info of my the salesperson, right? Okay. Okay, so we have another table also. So we have table company. So we have another table company. So company may we have company ID, name and city. है ना? So company ID is the इसको भी copy कर लेता हूँ. So we have the company ID, name and city. So company ID is a primary key. So company ID is the primary key. Each row of this table indicates the name of the ID of the company and the city in which the company is located. So name of the ID of the company and the city in which the company is located. Okay. So it's more of a company information here for me. Cool. Okay, we have another table. Interesting. Okay, so we have table orders. So we have table orders. Again, इसका भी copy कर लेते हैं content. So table orders is like this.
Okay, so order ID is the primary key. Okay, so order ID again here. This is the primary key. Cool. And column for this table, uh, com ID. Com ID is a foreign key to common into company table. So this is my foreign key. ठीक है, foreign key. So basically foreign key simple language में ये joining condition है मेरा, ठीक है? Because इसको अगर इस company on orders को join करना है, so that will be on company ID. Cool. That's what we'll be doing at. Sales ID is a foreign key to company ID from the salesperson table. So each row of this table contains information about one order, right? So each row of this table. So here we have the order ID. So okay, so one row is basically my one order information. And order ID है, date है, company ID, sales ID and all. So sales ID, okay, sales ID भी है यहाँ पे, तो sales ID ये होगा मेरे ख्याल से, है ना? Okay, so each of the contains, so this includes the ID of the company, ID of the salesperson. So this is again a foreign key for me, foreign key. Okay, so we will do that. So the date of the order and the amount paid. Cool. Okay. So the question here is write a SQL query to report the names of all the salesperson who did not have any orders related to the company with the name red. So write a SQL query to report the names of all person. Okay. So the names of all persons who did not have any orders. Okay. All sale person name who did not have any orders, who have no orders from company का नाम क्या है, रेड है ना, यही क्वेश्चन है. सो मेरे को कंपनी का सेल्स पर्सन का नाम चाहिए. तो एनीवे मेरे को आउटपुट में एक नेम का कॉलम होगा, सो नेम होगा मेरे पास, है ना. और रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर. सो ऑर्डर नो ऑर्डर कांस्टेंट. सो वी हैव नो ऑर्डर कांस्टेंट. कूल है. डेटा देख लेते हैं एक बार. So we have this information. So we have sales person का table. So I have ID and all that. So John salary value सब दी हुई है. I have the company table. So company table भी है. Okay, this is the name of my company, Red, Boston में है, and company ID and all that. And I have the orders table. So orders ID है and all that. So order ID. Okay. Okay, so company ID 1. So Red का company ID 1 ये हो गया. Okay. So ये सेल्स पर्सन यहाँ पे 1 and 5. So basically 5 ने यहाँ पे सेल नहीं किया, एलेक्स ने सेल नहीं किया यहाँ पे, है ना. So एलेक्स इसका आउटपुट होना चाहिए. Cool, right. So Alex is my output, for example here. Again, I mean definitely. So Alex 2 ने भी नहीं करा है, obviously. So 2 ने भी नहीं करा है, and 3 ने भी नहीं करा है. Mark, Amy, Mark, and Alex, है ना. So okay. So the name of the person who has not anywhere delivered, taken any orders for the company Red, basically. ठीक है. Simple, yeah. I mean, it's actually an easy question only. Again, guys, quickly, just give me few simple pointers. कैसे कर सकते हैं? Simple pointers. Give me few English sentences, guys. How can we solve this? Simple question है यार ये तो, मतलब I think we have already solved these set of questions before. So the only trick here is definitely we have multiple tables, ना. So ultimately join one तो करना ही पड़ेगा, है ना. So we'll have to join these tables somehow. We'll see that, है ना. So we'll see that. Okay, so how can we do that? Cool. देखो, इसको multiple ways से solve कर सकते हैं. Ultimately flow क्या होगा? So flow में क्या है? चलो let's try to flow is more like we have multiple tables. So join, definitely have to find out join multiple tables, right? So what we can do here is we can first find out where this red table में ID है ना. So we can simply in this case, so we have a suggestion नया second and third table join करके name extract करेंगे. थोड़े who have no sale, then well check in between first and the second table. Yes, absolutely, we can do that. In fact, the similar thing. So
in fact, the same thing I was trying to say here. So what we can do is, maybe we can join this company table and the orders table first. So what we can do is, we can see like, yeah, exactly, second and third table. So company table and order table को हम join कर लेंगे, ठीक है. अब इसको join करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें I'll filter only red transaction, ठीक है. And इस further इसमें क्या कर लेंगे, we'll figure out the sales ID, I mean the distinct sales ID, है ना. So ये क्या देगा मेरे को, this will be my one table, okay. So this will be my one table. So here the output would be sales ID with transaction in red. Cool. So I'm saying that I'll be doing this. So I'll be creating this first table जहाँ पे जिसका output होगा one single column sales ID with the transaction in the red company, है ना. So now मैं क्या कर सकता हूँ, on top of this, this is my one table. So this entire thing is my one table, okay. So what I can do is select and this is that again on top of this I can find. So what I want here in this case, I don't want these IDs, right? So I want to exclude these IDs ultimately at the output. So I can just simply say select what? So I want the ID, the sales ID, for example, sales ID, right? So sales ID from my table name, right? Where sales ID is not in this table. समझ में आया? सिंपल है, सेम तरीका है. मैंने आई थिंक दिस इज व्हाट नायर वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन आल्सो. सिंपल, हमने क्या कर लिया, हमने एक कंडीशन बना लिया जहाँ पे ऑलरेडी वो ट्रांजैक्शन रेड से हो रहा है, यूनिक सेल्स आईडी निकाल ली. तो अल्टीमेटली आउटपुट में मुझे इसी को डिस्कार्ड करना है, राइट. सो आई डोंट वांट दीज आईडीज टू बी पार्ट ऑफ माय आउटपुट, राइट. सिंपल है, तो वही करते हैं. सिंपल लॉजिक से ही सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको. तो कैसे कर सकते हैं गाइस? तो सबसे पहले ये वाली क्वेरी लिख देते हैं. सो विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम कैसे how we can find out such people जहाँ पे हमको ज्वाइनिंग करना होगा. तो कैसे करना होगा ये, अभी पहले मैं इस वाले टेबल का काम कर रहा हूँ, ठीक है. सो अभी मेरे को सेलेक्ट करना है, आई वांट सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, मेरे पास सेल्स आईडी होनी चाहिए. सेल्स आईडी है ना, सेल्स आईडी होनी चाहिए. सो सेल्स आईडी इज व्हाट आई वांट, है ना. फ्रॉम मेरे पास यहाँ पे कंडीशन, बिकॉज मेरे पास अब दो टेबल यहाँ पे, है ना. सो वेयर मैं आई एम सेइंग दैट अब क्या क्या ज्वाइन करना है, मेरे पास टेबल है कंपनी एंड द ऑर्डर्स, है ना. सो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हर एक ऑर्डर्स के अगेंस्ट में कंपनी का नाम चाहिए, राइट. सो लुक एट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई वांट हियर. सो आई वांट फॉर ईच ऑफ माय ऑर्डर आईडीज आई वांट द कंपनी नेम टू बी पार्ट ऑफ इट. सो दैट्स माय रेफरेंस, राइट. सो आई वांट ऑर्डर आईडी टू बी प्राइमरी टेबल and then I want my company to be joining on top of that. So basically for each order I want the company name to be provided. So here I'm taking order as a base, right. So that's going to be my left table. Cool. So I can do, so our table का नाम क्या है, orders. So orders, from orders left join company. So company orders left join company on क्या होगा मेरा, ऑर्डर्स को मैं O कर देता हूँ एंड कंपनी को मैं C कर देता हूँ. सो इट विल बी लाइक ऑन O डॉट कंपनी ID. सो O डॉट कंपनी ID इज इक्वल टू C डॉट कंपनी ID. कूल, सिंपल है. इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिंपल उन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया. अब मैं और कंडीशन क्या है इसमें, आई वॉन्ट ओनली द पर्सन, ओनली द पीपल जहाँ पे मेरे पास ये इंडिविजुअल ये आई हुई है ना. सो मतलब जहाँ पे मेरे पास ये रेड की ट्रांजैक्शन हुई है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. सिंपल है, यहीं पे लगा देता हूँ. वेयर इन दिस केस द नेम, राइट. सो आई वांट वेयर C डॉट नेम इज इक्वल टू रेड. ठीक है. वेयर C डॉट नेम इज इक्वल टू रेड. सिंपल है, इसमें कुछ भी फंडा नहीं. अब ये मेरा क्या है, एंटायरली दिस इज माय वन टेबल. ओके, अब सेलेक्ट आईडी भी तो करना है, सेल्स आईडी भी तो करना है. सेल्स आईडी मैं कहाँ से लूंगा, सिंपल है, सेल्स आईडी का आपका यहाँ से ले लेता हूँ, ऑर्डर से ले लेता हूँ. सो आई हैव माय O डॉट सेल्स आईडी, है ना. सो दिस इज गिविंग मी दिस टेबल एक्चुअली.
So now I have my this entire table here. Cool. This is giving me the sales, only the sales ID here. So output क्या है इसका? Output सिर्फ एक sales ID है मेरे पास, right? अब मैं क्या बोल रहा हूँ? I want to select the sales ID from the table where actually इसका opposite होना चाहिए. ये मेरे को नहीं चाहिए. I want to exclude this list, right? Exclude कैसे करते हैं? Not in. Simply एक list है ये. So not in this. So what can I do on top of this? Select what I want. So I want to select basically my the name, right? I want it from my name. So I'll simply write the name here for now. So select name from my salesperson table. So from salesperson, what give is S. So that's gonna be my S dot name. Okay. So from salesperson S. Okay. Now what I want? So I want to say that where my ID is not within this. So where the S dot sales ID, S dot sales ID, not in this. Cool, simple हो गया. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई दिक्कत इस कोड में? सिंपल है ये तो. इनफैक्ट लेट मी रन दिस, है ना? Cool, sorted. Anybody is having any concerns in this? A quick thumbs up if you're able to understand this question. Cool, thank you Nayar. Great. Okay, so okay, let's submit this also. Let's move to the next question in that case. Great, done. भैया crud समझा नहीं मैं यार, क्या बोल रहे हो आप? What do you mean by crud? क्वेश्चन कवर हो रहा है. ओके माय बैड यार, ये अभी दिख रहा है मेरे लेफ्ट साइड से क्या? ओके यार, ये इसमें यही प्रॉब्लम है. लेट मी जस्ट चेक इट गाइस, सॉरी. अभी ठीक है? कूल है, अभी स्क्रीन दिख रहा है. आई थिंक एक बार मेरे को चेक करो. कूल, ठीक है. आई थिंक अभी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ फाइन, ओके कूल. CRUD ऑपरेशंस, अच्छा वो मतलब आप क्या बोल रहे हो? वो क्रिएट रीड वगैरह बोल रहे हो क्या? क्रिएट रीड अपडेट डिलीट वो वाला बोल रहे हो? I mean, do you want to repeat this question? I mean, ये बोलना चाह रहे हो, bong man? If this is what you want, I mean, you see again, I mean, if there's any question which is coming on top of my these set of things, so I think update का हमने एक question करा था इसके पहले, like some time back. There was one question on update. But generally, देखो मैं आपको बताता हूँ, for any competitive programming ना, like even for any interview question, 99% of the time your question will be from select query. 99% of the time, trust me on that. So create, read, update, delete जो basically आपका operation होता है ना, this is for, I would say mainly for database administrators, है ना? database administrators. अगर आप core administration job में जाओगे, because logically सोचो, आप कभी भी टेबल जो है ना बहुत ऑफनली क्रिएट नहीं करते हो, टेबल बहुत ऑफनली डिलीट नहीं करते हो. हाँ अपडेट कर सकते हो, बट वो भी बहुत ऑफन नहीं होता है, राइट? रीड के लिए तो वैसे भी यार हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना. सेलेक्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो रीड में सेलेक्ट तो आप कर ही रहे हो. सो सेलेक्ट स्टेटमेंट तो है मेरी. बेसिकली अब कमांड क्या, क्रिएट के लिए हम इंसर्ट यूज करते हैं. तो इंसर्ट की हमारी एक क्वेरी थी, हमने करी थी. अपडेट के लिए भी क्वेरी करी थी. डिलीट के लिए भी हमने शायद एक बार करी थी, एक दो क्वेश्चन था. बट 99% ऑफ द टाइम तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना सेलेक्ट स्टेटमेंट से ही होगा, है ना? Like whenever you go for any competitive programming or any interview questions and all that. So that's how the things are यार, है ना? But again, अगर आपको logical समझना है तो I will request you to follow our SQL series, जहाँ पे starting में मैंने insert, update, delete, select पे मैं थोड़ा सा आपको एक logical understanding दिया था. So you can refer that. So that should suffice. That should answer your question, है ना?
Great. चलो I think this is done. Submit हो गया है ये. इसको मैं next question देखते हैं. Okay. Tree node. Chalo. We're gonna follow the same thing. So we'll have input. We'll be having outputs. Then we'll be having constraints. We'll be having a flow. Okay. So input may having a table tree. So I have the table tree here. Cool. And this is my information ID and the PID. We're gonna just write that. And ID is the primary key column for this table. So ID is my primary key. Okay. As a primary key, each row of this table contains information about the ID of the node and the ID of its parent node. So this is ID of the node and this is my parent node ID. So parent node ID है यहाँ पे. Cool. Information of ID and the node of its parent node. ठीक है. So given structure is always a valid tree. So basically imagine ये करना है कि सारे valid tree हैं हमारे पास. ठीक है. So each node in the tree can be one of these types. Okay. So leaf is the node. If the node is a leaf node. Okay. And if the node is a root of the tree, and if the node is neither a leaf nor the root. Okay. So three types हो सकते हैं. Okay. So we have three types of node. है ना? And then write a SQL query to report the type of each node in the tree. Okay. So first each node I want the type. So output is type for each node in tree. Okay. So I want the type for each node in the tree, right? So return the result table ordered by ID. So I want ordered by ID in ascending order. Okay. So ordered by ID in ascending order. Cool. Alright. So result query format in the following table. So okay. So I have this is a tree structure. So I have 1, 2, 3, 4, 5. So 4 and 5 are basically my leaf nodes, and this is my root node. So this is my inner node. It's like PID is null because there's no parent for this. It's gonna be the root. And I have the 2, 3, 4, 5 here, and that's gonna be, so for 1 it's gonna be root. 2, okay, cool. ठीक है. So output में मेरे को क्या चाहिए? So I want ID and type. Okay, so I want ID and type here, and type में I want leaf, root and inner. ठीक है, cool है. So okay, node 1 is the root because its parent node is null. Cool. And has a child node, and it has a child nodes. Okay, so 1 का मेरे पास child node भी होना चाहिए, ये भी mandatory है ना? So and node 2 is an inner node because it has a parent node 1 and the child node. Okay, cool. And node 3, 5 they have the parent node but they do not have the child node. Cool. And again example है मेरे पास, simple एक tree है. So okay, so constant मेरे को देखना पड़ेगा. On single condition पे भी check करना पड़ेगा मुझे. Single condition is also important है ना? So we have to look at this as a edge condition. Okay, and then I have the ID. This is fine. If this is the only one node tree, you can need input. ठीक है. Cool. चलो ठीक है. Fair enough. Simple है. Logic. I think समझ में आया. Just let me know if the question is clear to you quickly. We'll do that again. It's I think it's not very tricky. It's simple only. हम इसको definitely case से भी कर सकते हैं. Case से कर सकते हैं. Case is very simple. Case is actually simple. We can do that. We'll try to do it through case only.
But again, guys, if you're able to understand the question quickly, just give me a thumbs up in the chats. If you're able to understand the question clear है कि नहीं? सबसे पहले तो वही important है. Quickly, guys. If the question is clear, just thumbs up in the chat would be really good. Yes, yes. हाँ जी, इनपुट के अकॉर्डिंग से बताना है. सो मेरे पास जो भी इनपुट नहीं, इनपुट के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें. जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी आईडीज होंगे ना यहाँ पे, जितने भी आईडी हैं इसके पास, सबका उसको टाइप बताना है. अगर सपोज इसके पास 20 नोड्स हैं तो 20 का इसको टाइप बताना पड़ेगा, है ना. सो जितने भी आईडीज अवेलेबल है उसका इसको टाइप बताना है. सो ये एक्सपेक्टेशन है इस कोड का, क्वेश्चन का. ठीक है. अब ठीक है क्वेश्चन. थैंक यू सो मच प्रशांत. समझ में आया आपको. अगेन क्विकली, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कैन यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम. हम क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट स्ट्रैटेजी कैन वी टेक ऑन टॉप ऑफ दिस? हम इसमें एग्जैक्टली किस तरीके से कर सकते हैं? देखो इसमें अगेन सिंपल सिंपल. तो चाइल्ड नोड है तो वो लीफ नोड हो गया ना. सो जैसे सपोज इसका डेफिनेशन क्या है? अगर रूट नोड है, सिंपल समझो, अगर रूट नोड है, रूट नोड का मतलब क्या है? उसका पेरेंट कोई भी नहीं है ना. सिंपल है. अगर अगर किसी भी नोड का पेरेंट नहीं है तो वो रूट नोड है ना. अगर किसी भी नोड का आपका पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है ना. सो आई मीन पेरेंट आईडी भी ट्रू है और चाइल्ड आईडी भी ट्रू है. मतलब बेसिकली पेरेंट है, उसका पेरेंट भी है और वो खुद भी किसी का चाइल्ड है. मतलब खुद भी आई मीन किसी का नोड, लीफ नोड, चाइल्ड नोड है. सो इन दिस केस आई विल बी सेइंग कि वो इनर नोड है, राइट. और लीफ नोड क्या है? सिर्फ उसका पेरेंट है बट उसका चाइल्ड नहीं है ना. वो एंड नोड है. सो दैट्स गोना बी माय लीफ नोड, राइट. सिंपल कंडीशन है. देखो ऐसे कंडीशंस जहां पे हमें दिख रहा है कि देयर इज अ कंडीशन एंड देन ऑन दैट वी हैव टू टेक सम डिसीजंस. ऑफ कंडीशन डिसीजन का जो पैटर्न है, केस बहुत सिंपल हो जाता है. केस ऑलवेज मेक्स द क्वेश्चन वेरी सिंपलर. सो केस बहुत ही सिंपल हो जाता है. यहाँ पे हम केस से सॉल्व करते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पैटर्न. सो पैटर्न क्या है यहाँ पे? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न इज if we have some condition, multiple conditions basically. So if we have conditions and based on that condition we have to put some condition, I mean take some action on top of that, right? So here condition क्या है? अगर id null है तो वो root हो जाएगा. This is the statement, right? If id is null then it's gonna be root. Simple है, right? Likewise we can define it for inner, we can define it for leaf also. तो मैं बोल रहा हूँ फ्लो में सिंपल है. if id if PID is equal to null, I'll be saying root. So this is gonna be my root. अरे यार, this is gonna be my root node, है ना. इनर के लिए क्या? इनर के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? जहां पे मैं बोलूंगा कि मेरा पेरेंट आईडी जो है, जो पेरेंट आईडी है वो नल नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट नन. ओके. और क्या होगा? इसके लिए थोड़ा ट्रिकी है, मुझे इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा बिकॉज नाउ इन दिस केस if the particular id is the parent for something and also if it's child for someone, because we don't have, right, we just only have the id and the parent id, right. Again we have to compare it twice, right. So we are comparing the id of the same node with both of my parents. So basically whether it's going to be whether it is a child or still a parent, so it's whether it has both, right. So it's more like you are comparing it twice here, right. So we can always do a join from in this case, right. So we can obviously do a simple join of both the trees and again we can simply compare if my id is equal to my parent id basically, right. So it's more like my id is equal to my parent id in this case. So now मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ basically, फ्लो बनाते हैं. सो सॉरी मैं कोड लिखता हूँ. सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? सेलेक्ट में मुझे चाहिए सिंपल आईडी वैल्यू चाहिए. सो आईडी मतलब जो मेरी आईडी है ना, आईडी में ऐसे लिखता हूँ अभी फॉर एग्जांपल. इस आईडी पे मेरे को चाहिए. अब यहाँ मेरे पास कंडीशंस आते हैं. सो आपको पता है कि आपकी कंडीशन केस की स्टेटमेंट सेलेक्ट में ही लगती है. तो केस का क्या फॉर्मेट है? सिंटेक्स क्या है केस का? केस when basically and then my condition comes. So condition है ना, then value and end.
Cool. This is my actually logic of this is the I would say syntax of my code, right? So and then it multiple whens, so like multiple when then, so I can have still have this when, and then I can just keep on adding when and all that, and then it's gonna be ending. So this is my syntax of the case statement basically, right? You know this. ओके सो अभी हम क्या कर सकते हैं? अब मेरे पास क्या लॉजिक है? सो केस सबसे पहला मेरे पास क्या कंडीशन है? केस व्हेन in this case my id, right? So my parent id is not null. So in this case I'm saying my p underscore id p underscore id is not null, not null. If my parent id is sorry, is null na, so root के तो null होगा, it's null, then क्या है ये? It's gonna be root. Cool. Okay. So I'm saying that if parent id null है तो वो root हो जाएगा. ये तो simple है, इसमें तो कोई इसमें doubt नहीं है. Problem आएगी. Actually inner को हम कैसे compare करते हैं? So मैं क्या कर रहा हूँ? As it is रहने देता हूँ case statement. यहाँ पे एक काम करता हूँ, from लिखता हूँ. From क्या करना है मेरे को? I want it from tree, right? So table name is tree. From tree. I have tree here. We're just gonna do left. So tree कोई tree से join करना है मेरे को. So tree, I'm just gonna do a left join, for example. Left join tree. So I have tree as say T1, and then I have say this is like T2 for me. So T1 left join T2 here on what? So on T1 I'll be putting, so ID is equal to T2 dot PID. Cool. So this is where I'll be joining this condition on. So if these are fine, these are my condition जहाँ पे उसके पास parent और child दोनों हैं. So मैं जहाँ पे compare करूँ TID dot PID, right? And ठीक है, ये मेरा टेबल हो गया. अब यहाँ पर मैं इसका कंडीशन लिखूंगा सेकंड वाला फॉर माय इनर, है ना? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस केस में? when so this will become my t1 dot pid actually. So t1 dot pid is null, then root, and then when my condition comes, ये थोड़ा tricky है, कर सकते हैं. When my again t1 dot, so t1 dot pid here, this time it is not null, right? So this is null, and also my .id. So t1 का तो मैंने pid बना दिया, which is my actually parent id, and also in this case it has a child also, right? So and t2 dot id is also not null. So t1 dot pid, I mean t1 का parent id and my t2 का id, they both are not null. And in this case I'll be saying then, and I'll be saying this is my inner. Cool, fine, logic सही है. And then okay, so I can just simply write else. This is like my last. So else is gonna be my leaf, whatever left. So this is not needed actually here. So end. So now I've started my case statement. This is my second column. So this is my case statement as a column. So now in this case id, right? So I'll be referring id here. So t1 dot id. So t1 dot id from this on this table looks like good to me. Pretty much good. रन करते हैं इसको. मुझे सही लग रहा है ये लॉजिक. Wrong answer. Why? क्या कर दिया मैंने? अच्छा, इसको नेम नहीं करा क्या? As type. Okay, so ये actually टाइप ही चाहिए ना इसको? हाँ, टाइप ही चाहिए ना, टाइप चाहिए id टाइप. ओके, सो as टाइप. ओके, रॉन्ग आंसर क्यों आया यार?
1 1 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अच्छा डिस्टिंक्ट का फंडा है इसमें ओके सो डिस्टिंक्ट नहीं करा है मैंने ठीक है सिंपल है इसमें बिकॉज ये 1 2 1 1 ठीक है ये एक्चुअली लेफ्ट ज्वाइन के चक्कर में प्रॉब्लम हो गई है ओके सो इसको एक काम करते हैं इसको कर देते हैं डिस्टिंक्ट है ना सो डिस्टिंक्ट हो गया ये एंड ठीक है हाँ सही है चलो आगे देखते हैं ठीक है कूल लॉजिक समझ में आया सबको ओके वी हैव अ क्वेश्चन हियर शीतल सर डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट भी लो पाइथन में ठीक है यार विल डू दैट शीतल व्हाई नॉट we'll do that data structures. In fact, I have planned, but unfortunately, so there's an issue with the CodeBeyond channel. So most probably by after 31st, there'll be a problem in going live. We'll see that. We'll see how we can take it. So we're still planning how we can take it forward. I'll update you on that. Okay, another question. So C++ में competitive programming के साथ साथ SQL भी करना होता है, development भी कर रहे हैं, साथ साथ just don't know the correct path, what to do, please थोड़ा guide कर दो. Okay. Okay. Again, C++ programming and SQL. Yeah, I mean they are pretty much equally important, I would say. Uh, but again, it's more of the sort, which I would say, the kind of stream you're looking into, right? So competitive programming, C++. I mean, competitive programming is done in multiple languages, right? You can still look for Java, C++, C Sharp, Python, SQL, right? So I would still say it's not mandatory for you to know everything on day one, right? So because anyway you have to start, right? So I would still say अगर आप C++ कर रहे हो तो focus on C++ and definitely अगर आप इसको साथ में tackle कर सकते हो साथ साथ में C++ and SQL, nothing like that, right? So it's anyway an advantage to you, right? But again, if you're feeling that, because for the sake of it class करके कोई फायदा नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, है ना? अगर समझ में आ रहा है, if you're able to take that, it's obviously an advantage for you, right? But again, from my side, if I say कि आपको C++ भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, सब आना चाहिए, तो फिर आप भगवान बन जाओगे ना? आपको तो सब आता है, right? So think logically, है ना? So I would say सब कुछ जरूरी नहीं होती है किसी के लिए भी. That is impractical. Nobody expects you to know everything, okay? But still, I would say if you can manage it with your time frame, if you're able to understand it, it's always an advantageous situation for you. Cool. Great. So submit कर देते हैं इसको, and then we'll go to the next question. Great. मजा आ रहा है guys? I mean, you're liking it. You're able to understand the codes. Cool. Great. Thank you so much, guys. चलो इसको solve करते हैं. We have inputs again, so we have outputs. We have constraints. Then we have the flow. Here, triangle. So table is triangle. Now we have the columns x, y, z. लिख देते हैं यहाँ पे x, y, z. Cool है. And then x, y, z is the primary key column for this table. Again, it's a composite key, guys, right? So ये combination में मेरा primary key है ना? ये ना इंटरव्यूज वगैरह में जनरली पूछ देते हैं, है ना? कॉम्पोजिट की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की. ये बहुत, आई मीन इट्स अ वेरी, आई वुड से, आई एम अ रिक्रूटर माई सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, ओके? सो या दीज आर वेरी वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन. सो मैं इससे ना थोड़ा टोन सेट हो जाता है कि बिकॉज अब जब तक आप लैपटॉप ओपन कर रहे हो, आई मीन you're opening the IDE to solve the question, so it just sets up the tone for the interview, right? So very very handy questions which generally the recruiter asks, right? So कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की. गाइस इसमें किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज टेल मी, ओके? देयर इज नो शेम ऑफ थिंग. इफ यू डोंट नो इट, जस्ट टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, राइट? देयर इज नो शेम इन आस्किंग थिंग्स, बट
please, after this call, after whatever we are discussing in the class, you should be knowing things, right? I mean, I'm not coming here for my sake. It's not a fun job for me, right? I mean, anyway, I like doing it, but still, I mean, I'm not coming here for fun here, right? So it's more like, if you're not able to understand, there's no point of me sitting here, right? So समझ के बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आता है, please let me know. I'll explain it. Because मैं many times repeat करता हूँ, composite key, primary key, foreign key and all that, right? So ये important things हैं. फॉरेन की देखो, ओके, अच्छा आपने पूछा फॉरेन की, मैं बताता हूँ फॉरेन की क्या होता है. अब जैसे पिछला क्वेश्चन था आपको, मैं चलो उस क्वेश्चन के एग्जांपल से बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं एक्चुअली. आई थिंक ये फॉरेन की बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, एंड आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स इन दिस. फॉरेन की देखो, इसका ना आपको एक डेफिनेशन भी बताता हूँ, आप किसी को क्या बोलोगे, और इनफैक्ट आप उसको फिर रिलेट भी कैसे करोगे, है ना. चलो देखो यहाँ पे क्या है. Now look at these two tables here, man. So we have these two tables here, right? So we have company and the orders. सबसे पहले सारे कीज, ओके चलो सारे कीज एक्सप्लेन करता हूँ, फटाफट कर देता हूँ. प्राइमरी कीज क्या होता है? प्राइमरी कीज वो कीज जो किसी भी टेबल के एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, है ना. अब सपोज मेरे पास ये कॉलम, ये कंपनी का टेबल है ना. अब इसमें ये बोला कंपनी आईडी जो है मेरा प्राइमरी की है, मतलब अगर सपोज इस टेबल में 10 रो हैं, तो अगर 10 रो हैं मतलब इसके 10 यूनिक कंपनी आईडीज हैं, मतलब एक आईडी का सिर्फ एक ही कंपनी है. हाउ आई एम सेइंग दिस? बिकॉज कंपनी आईडी इज माय प्राइमरी की. No two rows can have the same company ID. So that is the definition of the primary key, because it should be unique. Every row should have a unique value. It is uniquely identifying my individual observations, the rows basically, right? That is primary key. Simple है, ये सबको पता होगा. प्राइमरी की के बाद कैंडिडेट की और कॉम्पोजिट की सिमिलर है. क्या है मैं बता देता हूँ. अब सपोज देखो, अब इस टेबल में देखो ऑर्डर्स में क्या है. इस टेबल में इसने क्या बोला, ऑर्डर आईडी मेरा प्राइमरी की है, मतलब एक ऑर्डर आईडी से मेरा एक ही ऑर्डर बन सकता है. अब सपोज अगर आप डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हो यार, आपका ऑर्डर आईडी 344 है फॉर एग्जांपल, और अगर किसी और का भी 344 आ जाएगा तो आप तो मार मचा दोगे, तो मतलब लड़ाई कर लोगे आप कि यार मैंने तो यार चीज बस ऑर्डर किया था, आपने भी ऑर्डर कर दिया, ये तो मेरा ऑर्डर है ना. यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, हर एक ऑर्डर आईडी यूनिक है, स्पेसिफिक टू वन पर्सन है वो, राइट. दैट इज व्हाट माय प्राइमरी की इज. बट अगर आप सेम टेबल में देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या कंपनी आईडी भी है. अब कंपनी आईडी क्या है, कंपनी आईडी भी तो यूनिक की था ना, कंपनी आईडी भी यूनिक की था मेरा, यूनिक की यहाँ पे इस टेबल के लिए कंपनी टेबल के तो यूनिक की था ये. तो एक्चुअली आप इसको देखो, जो कंपनी आईडी है आपका, ये भी आपका प्राइमरी की हो सकता है, राइट. इसकी भी टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है ना. जैसे आप उस बिल में देखो, आपके पास बिल में आपके पास ऑर्डर आईडी और अमाउंट होता है. यार अमाउंट भी मेरा यूनिक की बन सकता है, बट ये भी तो हो सकता है ना कि उस क्या बोलता हूँ, अमाउंट के डोमिनोज के बिल के अमाउंट का, सेम अमाउंट का दो बिल भी हो सकता है. बट वो एक उसकी टेंडेंसी है, उस अमाउंट में भी, मतलब देयर इज अ टेंडेंसी, स्टिल इट कैन बी अ प्राइमरी की, राइट. लाइकवाइज हियर दिस कंपनी आईडी, it still can be my primary key, but it is alone cannot be, right. So when a particular key has a tendency to become a primary key but alone it cannot be a primary key, right, वो अकेले नहीं कर सकता है चीज. तो उस केस में इस की को क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे. ये भैया ये सरकार बना सकता है, ये अगेन सरकार बना सकता है, कोई एग्जांपल, कोई नेम नहीं लूंगा. This person can make the your own party, but the problem is वो अकेले नहीं कर सकता, उसके साथ में जनता चाहिए, है ना, सपोर्ट चाहिए. तो उसके लिए सपोर्ट में क्या है, ये मेरा कैंडिडेट है, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, इलेक्शन का कैंडिडेट है मेरा. बट ये तभी नेता बनेगा जब ये कंपनी आईडी और ऑर्डर आईडी साथ में मिलकर काम करेंगे. सो इस केस में क्या होगा, ऑर्डर आईडी तो मेरा प्राइमरी की है भैया, वो अलोन काफी है वो, ठीक है. बट ये कंपनी आईडी और ऑर्डर आईडी को मिला करके हम प्राइमरी की बना सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है. सो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन एनी सम केस ऑर्डर आईडी जो है मेरा अलोन नहीं कर सकता एंड कंपनी आईडी अलोन नहीं कर सकता, बट दोनों मिलके वो काम कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, कंपनी आईडी एंड ऑर्डर आईडी विल बिकम माय कैंडिडेट कीज, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी आईडी एंड द ऑर्डर आईडी, जो मैं बोल रहा था कहीं पे था ना, वो 3 ब्रैकेट में करके लिख रहे थे, सो देन इट बिकम्स माय कॉम्पोजिट की. सो
together they are the primary key. So together, multiple keys together as a primary key, acting as a primary key, called as composite keys. And the individual composite keys which have a tendency to become a primary key, but still they alone cannot be a primary key, they are called as candidate keys. ठीक है, ये तीन चीज क्लियर हो गया, प्राइमरी, कैंडिडेट, कॉम्पोजिट. नेक्स्ट जो होता है हमारा फॉरेन की. ये थोड़ा ट्रिकी है बट सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस लॉजिक समझो यहाँ पे. अब क्या है, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सेम टेबल में देखो, कंपनी है मेरे पास कंपनी आईडी यूनिक की है यार, कंपनी आईडी मेरा प्राइमरी की है, राइट. अब इसमें देखो ऑर्डर्स टेबल में क्या है, ऑर्डर आईडी मेरा प्राइमरी की है, बट मेरे पास यहाँ पे कंपनी आईडी भी है. तो अब क्या हुआ, वैसा की जो दूसरे टेबल का प्राइमरी की है. तो यस, सो बेसिकली मेरा कंपनी आईडी दूसरे टेबल, जो मेरा कंपनी टेबल है वहां पे ये प्राइमरी की है, बट इट इज नॉट अ प्राइमरी की इन द करंट टेबल. सो ऑर्डर टेबल के अंदर ये प्राइमरी की नहीं है, बट इट एग्जिस्ट. ओके, सो द की विच इज a unique key in one table but a candidate key in other table, it's called as a foreign key. समझ में आया, ये सिंपल समझ में आया. So in this case company ID, it has a tendency, it has a capability to become a primary key, right, but ये नहीं बन सकता, alone नहीं बन सकता. और and also ये कंपनी आईडी मेरा एक्चुअली एक प्राइमरी की भी है दूसरे टेबल का. तो इस केस में कंपनी आईडी विल बिकम द फॉरेन की ऑफ दिस, फॉरेन की फॉर कंपनी टेबल. सो अब ये तो मेरा ये डेफिनेशन हुआ है ना. अब इसका मतलब क्या है, फॉरेन की सिंपल आप यही समझो, सी स्ट्रेट सीधा भाषा में, कि अगर आपको दो टेबल को ज्वाइन करना है तो दिस इज माय जॉइनिंग कंडीशन. सो ये दोनों टेबल का जो लिंक है ना मेरा बीच का, दिस इज द फॉरेन की. फॉरेन की इज द लिंक बिटवीन माय टू टेबल्स. आप दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन द फॉरेन की, बिकॉज दिस इज हाउ द टेबल्स आर कनेक्टेड. समझ में आया गाइस, कोई डाउट है? दोनों के एक टेबल में समझा नहीं यार. अब जो मैं समझाया आपको गाइस, समझ में आया? प्लीज क्विकली यस और नो. ग्रेट. सो आई बिलीव कोई भी अभी इंटरव्यू में पूछेगा आपसे, है ना. सो कोई भी इंटरव्यू में पूछता है क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, आपको अब आप एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट. देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग दिस. सिंपल कॉन्सेप्ट है यार. बट देखो मैं स्टिल आपको एक चीज बोलता हूँ, सबको सब कुछ आए ये जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू नो एवरीथिंग. अगर सबको सब कुछ आ जाएगा, एवरीबडी विल बिकम अ गॉड, राइट. दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू नो, राइट. बट इन दिस केस आई वुड स्टिल, आप जो है सिंपल भाषा में जो भी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, है ना. वो आपको सिंपल सिंपल भाषा में पता होना चाहिए. ओके, सुपर की नायर, अगेन अगेन अ गुड क्वेश्चन. सुपर की, और किसी का कोई डाउट है सुपर की के अलावा? सुपर की एक्चुअली मैं बताऊं, इट्स अगेन एन एलियास बेसिकली. कॉम्पोजिट की जो मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, जो मेरा एक टप्पल एलिमेंट होता है जहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट कीज को टुगेदर मिला करके मैं प्राइमरी की बोल रहा हूँ, बेसिकली सुपर की भी उसी को बोलते हैं. सुपर की इज बेसिकली a group of, I would say, kind of a candidate keys taken together which is acting as a primary key for you, or a primary identifier for that, for a row. So that is again a super. So basically super key is similar to composite key which I'm talking about here. Cool. कैंडिडेट की मैंने आपको बताया ना. सो अगेन सुपर की या फिर कॉम्पोजिट की जो है मेरे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ जो हैं columns which uniquely can become a primary key, but still alone they cannot, right. So they need some support. So multiple keys which together they become a primary key. So each of these individual components of this super key or a composite key, they are called as candidate keys. ठीक है, चलो cool. समझ में आया ना? यार that's a good part. I mean guys, that like this is the way you should ask the question, right. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है पूछो, तभी ना मजा आएगा. मतलब मैं बनाता चला जाऊँ प्रॉब्लम, एंड देन आपको बेसिक चीजें नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना. मतलब एनीवे आई एम कमिंग हियर टू टीच, सो आप मुझसे पूछ सकते हो. ग्रेट, थैंक यू वंदना, थैंक यू सो मच, थैंक यू नायर. ग्रेट गाइस.
कूल चलो एक क्विकली क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं. इट्स ऑलरेडी टू लेट, सो इट्स 11:15. I didn't realize the time, so let's take one more question for the day. And so anyway, we started it, so let's try to finish this. Cool. So we have the table triangle, and this is my okay, guys. Quickly now, tell me what is this key called? So I have this XYZ here, right? A question to you. So I'm saying this together is my primary key. So what is what is this? What is the name of this key? Also, what is X called here? Quickly, guys. What is the name of this key here? If I'm saying XYZ is a combination, what is this key? Is this candidate key? Is this primary key? Primary key is anywhere there. So is it a super key, composite key, foreign key? What is this? Quickly, guys. Okay, so I think there's a network lag or something. I'm not sure. Okay, anyway, so this together again is the primary key, right? So basically, this is called as my super key or a composite key. Cool. And X or Y or Z, they are called as candidate keys. Cool. Great, guys. So ठीक है, चलो अभी ये बहुत हो गया candidate keys के ऊपर. Let's solve this problem. So each row of this table contains the lengths of three line segments. Okay, so these are basically my lengths of my triangle. ठीक है, cool. So write a SQL query report for every three line segments whether they can form a triangle. Huh? समझा नहीं मैं. Okay, write a SQL query report for every three lines. For every three lines. Okay, so there will be only three inputs here, X, Y, and Z. Okay, so X, Y, and Z में मुझे बताना है whether whether it will form a triangle or not. You know, this is the question I want. Cool. So for every three line segment, whether they form a triangle. Cool. So write down the result table in any order. So constraint में मेरे पास क्या है? No order constraints. Okay. So the question is the result. The query result format is in the following example. So I have the triangle table here. So X, Y, Z, 13, 15, 30, and 20, 15, 10. So right. लॉजिक क्या था? दोनों का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए ना, यही तो लॉजिक था ना. क्या लॉजिक होता है? एक्सप्लेनेशन नहीं दिया यार इसका. Okay. If I remember correctly, I think it's more like दो का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए ना, यही होता है ना लॉजिक. हाँ, यही होता है, सिंपल ही है, ये तो करना है. I think what they want us to check is the sum of any two sides basically. So it could be any two sides should be greater than the third sides. This is the basic logic of ये आपने 10th में पढ़ा होगा, उसे I think पहले ही पढ़ा होगा कि this is how the basic logic of triangle formation is, right? So I think this is what we have to justify here. So if this condition holds true, that's when I'll be saying triangle is formed, or else no, because I could see here it's like 13, 15, right? So it's 28. So 28 is lesser than 30. So this is wrong. So otherwise 15 plus 30 is lesser than 13 is fine. 13 plus 30 is lesser than 15, this is fine. But this X plus Y, this is lesser than 30. Sorry, so the sum of two should be greater than the third side. So this should be true, right? So and here in this case 10 plus 20 is greater than 15, 20 plus 15 is greater than 10, and 15 plus 20 is still greater than 20, right? So yeah, so this is, I think this is what they want us to check, right? So output में मुझे क्या चाहिए? X, Y, Z and triangle चाहिए ना. So this is what I want in the output. Cool. ठीक है, simple है I think. तो कैसे करेंगे? क्या क्या समझ में आ रहा है फटाफट? इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो हमने क्या फिगर आउट करना है इसमें? सिंपल है, देखो बेसिकली
हमें क्या करना है, इसको ना कंडीशन देखोगे आप अगर, सो जो कंडीशन हमें इम्प्लीमेंट करनी है, कंडीशन जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है वो क्या करनी है, x है मेरे पास, सो बेसिकली x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन z। मुझे क्या करनी है, y प्लस z शुड बी ग्रेटर देन x एंड क्या छूट गया मेरा, x प्लस z है ना, x प्लस z शुड बी ग्रेटर देन y। यही तीन कंडीशन मुझे इंप्लीमेंट करनी है, राइट। सो इफ, सो इसका बेसिकली एंड होगा, सिर्फ ऑल ऑफ दीज, लाइक इफ all of these are correct, then I'll be saying yes, else no। अरे यार, else, cool, ये इम्प्लीमेंट करनी है, राइट। सिंपल है, कुछ भी बहुत बहुत ही सिंपल है। केस डेफिनेटली स्वप्निल केस 100% कर सकते हैं, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट केस की भी होती है इसमें, सिंपल इफ पे ही चला दूंगा मैं तो इसमें। ये तो बहुत ही एक्चुअली सिंपल क्वेश्चन है। केस दोनों ही सही है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। सिंपल दिखाता हूँ, मेरे सिंपल है। तो अभी देखो आउटपुट में क्या करना है, मुझे सिलेक्ट, मेरे को क्या चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जी चाहिए। इसमें तो कोई टेंशन नहीं, बिकॉज ये तीन तो ऐसे ही के ऐसे ही आएंगे ना। एंड देन बेसिकली प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पर है, जो हमने ये ट्रायंगल कॉलम बनानी है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मेरे पास इफ, इफ मेरे पास क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन माई z, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन z, एंड y y plus z is greater than x, and I'll be saying what, so x नहीं, क्या छूट रहा है यार, x plus z छूट रहा है, x plus x plus z is greater than y, है ना। So if all of these are true, so if all of these conditions are true, then I'll be saying, so this is my entire condition, so then a comma here, in this case I'll be saying yes, right, or yes, and again a comma, no. Cool, this is my condition, right? So if this holds true, I'll be saying yes, or I'll be saying right, and I have to name this column as triangle. This one will be triangle, and I'll be saying from, from okay, say from a table नाम क्या है मेरे, सो टेबल का नाम भी ट्रायंगल ही है, सो फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है। और भी चाहिए हमें, सिंपल है ये तो, चलो ठीक है, इसको रन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्या कर दिया मैंने, अच्छा कॉमा ये चला गया, ठीक है, सिंपल है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चलो ये बहुत ही सिंपल हो गया था यार। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज क्वाइट सिंपल। चलो लेट्स डू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन प्लेन, ये करते हैं। Cool, so we have inputs, we have outputs, we have constraints, and we have the flow. Cool, क्या मेरे पास टेबल नेम इज पॉइंट टू डी, ओके, टेबल मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ। सो टेबल नेम इज पॉइंट टू डी, cool। Then we have the columns here, x and y, so it's going to be x and y, and so I have that point table point D, column x and y. So x and y here are the primary key, so x and y together are the primary key, so again this combination is my primary key, cool। And for this table, so each row of this table indicates the position of a point on the xy plane,
coordinate basically, right? So each row of this table indicates the position of a point on the xy plane. So basically coordinates CM. So you know, this is explaining my position on xy plane. Okay. So now what I want, so distance between the 2 points P1 x1 y1 and P2 x2 y2 is square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ठीक है. So ये formula है basically, है ना? So I have just copy it here. So it's gonna saying this. So I have P1 and P2 here, right? So the output would be, so this is gonna be my square root of on the values here, basically square. So x square x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square. Cool. ये भी तो सिंपल ही क्या करना है इसमें. Okay, so I have so distance between 2 points. So output क्या निकालना है मुझे इसमें, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं. Okay, so distance, so write a SQL. Okay, so ये तो पढ़ा ही नहीं है मैंने. Write a SQL query to report the shortest distance between any 2 points from point 2D table. Round the distance to 2 decimal places. So I want the shortest distance. Okay, so first of all I want the shortest distance. So in the output I want the shortest distance. What is that? So between any 2 points. So between any 2 points. So out of all the calculations I want to sort it and then find the simplest one. So what I want, so output में I want, so between any 2 points basically, है ना? And also I want the distance, round distance to 2 decimal places. So constant में क्या है मेरे पास? Round to 2 decimal places. Swapnil has a question. So, system design पूछते हैं क्या सर, like IICT का database, company management का database. यार इस स्वप्निल, इट्स अ वेरी वेरी जेनरिक क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो सपोज अगर आप किसी एंट्री लेवल पोजीशन के लिए जा रहे हो फॉर एग्जांपल, राइट, सो दे कैन नॉट आस्क यू टू बिल्ड एवरीथिंग. So they'll check your basic things. Like definitely there are few odd instances where they ask you to go through some case studies, right? So where you have to do some logical thinking for your problem statement, right? So yeah, in that cases they may not still ask you to find out to tell me the you know the system design between of your asset management, because there's a lot of team involved in this. So there's a lot of if and buts, but yes, on the core front logically you can still think ये complexity हो सकती है, हमें कितना एक्सेस करना है, तो रीड राइट फास्ट होना चाहिए, इस टाइप के डेटाबेस में हमें चुनना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो अगर आप बिगिनर लेवल पे बोलोगे, फ्रेशर लेवल पे बोलोगे with 2 3 4 5 even 5 years of experience, still I would say no, this is not an ideal question to ask. But yes, if you go for a senior position, then yes, might be, yes, definitely you can expect this question to be part of your question states. So it depends on what role you're getting into, to be honest, right? क्या position पे आप जा रहे हो. Cool. ओके, शॉर्टेस्ट निकालना है हमें, सिंपल है. ठीक है, आई थिंक फ्लो, आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ अगेन ये भी हमें बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं लग रहा है. बेसिकली हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, सारों के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना. सो स्क्वायर रूट करके हमने इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टेस्ट को निकालना पड़ेगा. अगेन कैसे हम इसको करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसमें. Okay, Surat says select x1, x1, y1, x2, y2 and distance from 2 copies of the tables where xy does not match, as we can use it as a primary key. Very very good point, very very good point, Suraj. Yes, absolutely we can do that. Very well said. Absolutely, because combination ये हमारा primary key है ना. तो अगर हम same set के table को join कर रहे हैं जहाँ पे equal नहीं है ना. वेरी वेल सेड यार, बिकॉज बिल्कुल सही बोला आपने. ये बिल्कुल ये कॉम्पोजिट की है, सेट में अगर इक्वल नहीं है, हम अगर इसको साथ में ज्वाइन कर लेते हैं P1x और P2x करके, एंड वो मैच नहीं करने चाहिए. बिल्कुल सही, बिल्कुल मैच नहीं करने चाहिए. सो इन दिस, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने. दैट ओनली, वेरी वेरी वेल सेड. सो व्हाट ही इज सेइंग इज बेसिकली, आई विल टेल यू. सो सेलेक्ट
this is where our shortest calculation will come. We'll do that. So calculation would come. What he's saying is this. Basically from, so table name क्या है, point 2D है ना, point 2D, from point 2D. So if I take this as say T1 and so in point T1 and then I have he's saying again use this point T2. So just simply let's put it here and just simply join this. So I'm join my point 2D table twice. On what condition? What he's saying is on. So basically in this case set is the primary key, right? So x and y together, they are the primary key, right? So where now in this case we can always say that my t1 dot x should not be equal to t2 dot x, right? And t1 dot y should not be equal to t2 dot y. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? t1 dot y and t2 dot y not equal to t1 dot y. यार प्रशांत पढ़ाना तो चाहता हूँ यार, बट मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कैसे पढ़ाऊँ. I'll actually just allow me couple of days more time, so we are still figuring out कैसे कर सकते हैं. हाँ पढ़ाऊँगा तो ज़रूर यार, बट कहाँ पढ़ाऊँगा कैसे पढ़ाऊँगा वो I'll tell you, है ना. in a meanwhile we are still figuring out कैसे करना है, बट प्लान तो है यार बिल्कुल. हाँ सो अभी x हो गया मेरा, t2 का भी हो गया, should not be equal to and the y similar हो. अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन डाल देते हैं. ये मेरा ज्वाइन हो गया दोनों टेबल का. अब यहाँ पे मैं दो टेबल का मेरा p1 और x1 x2 कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना. सो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फॉर्मूला क्या बोलता है यार, फॉर्मूला बोल रहा है पहले मेरे को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर. सो ओके, सो मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस के लिए लिखता हूँ एक बार, है ना. सो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. सो पहले मुझे क्या चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, x2 माइनस x1, है ना. सो दोनों अलग अलग टेबल्स क्या बोल रहा हूँ, पावर ऑफ x2 माइनस x1. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, t1 डॉट x माइनस t1 नहीं सॉरी t1 डॉट x माइनस t2 डॉट x, है ना. सो यार तो t1 डॉट x माइनस t2 डॉट x में बोल रहा हूँ पावर ऑफ 2. सो पावर ऑफ 2, है ना, ये हो गया. और सेकंड क्या बोल रहा हूँ, सेम चीज में बोल रहा हूँ पावर ऑफ माई t1 डॉट y माइनस t2 डॉट y. ठीक है, एंड इसका मैं पावर 2 बोल रहा हूँ. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बन गया, अंदर वाला पार्ट बन गया, है ना. सो मैं क्या कर दिया, इसको पावर कर दिया ऑन माई इंडिविजुअल 2 हियर, राइट. सो ये तो सिंपल है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, I want the shortest of the distances, right? So for so what I do here, I can do here this part. So this just for this I can just take a minimum of this, है ना. So minimum of my entire value here, and then I also want square root. So I also want my square root of this. So I just want a square root. So square root will become my actual values of my square root. So square root is still fine. And I also do I need to take a round one and all. So round to two decimal places. So round is also needed. So on top of this again there'll be round. So round, and I'll be saying round of 2. Right, is what I needed. So again just pull it down. So this is what I need. This is the formula I need, right? So square root and all that. So this is done. This is my formula, and I need to rename this also, right? So I need the shortest. So rename this entirely as shortest. Cool, simple. ये कर लिया ना हमने. ठीक है. So now let's run this. Wrong answer. क्यों भैया wrong answer क्यों आ गई? Output is 1.41. Okay, 41 output value इसको 1 चाहिए. क्यों? क्या गलती कर दी मैंने?
सो सही तो करा है मैंने. पावर पावर क्या गलती करा मैंने यार इसमें. t1.x माइनस t2.x, ठीक है, पावर कर दिया 2 का, प्लस t1.y माइनस t2.y पावर का कर दिया 2, और इसका मैंने लिया मिनिमम. सो मिनिमम तो लेना ही है ना भाई. तो मिनिमम तो इसने लिया ना, मिनिमम ऑफ. सो मिनिमम ऑफ स्क्वायर रूट है ना. सो मिनिमम ऑफ मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, एंड देन उसका मैंने राउंड भी ले लिया. सो राउंड तो ठीक कर रहे हैं ना ये. सो p1.x इज नॉट इक्वल टू p2.x. अरे यार, हाँ सिंपल यार, ध्यान नहीं दिया मैंने. नहीं नहीं, एक्चुअली ये मैंने ये कंडीशन गलत लिखी थी यार. ये एंड नहीं होगा ना, और होगा ना, ये ध्यान नहीं दिया मैंने. ओके प्रशांत, well, you can take your own channel. Your own channel भी बना सकता हूँ. I have not created it yet, so I mean it'll take time to flourish, right? So it's hardly few people know me. So even if I make the channel, so it's really difficult to publicize now, right? So it's too late for that. I can still think of doing it, but again, it takes a lot of effort and time to really do that. So I'm still thinking how we can do it with the bigger subscribers. Let's see how we can do that. It should be minimum version. नहीं minimum outside का नहीं है यार, वो तो simple calculation में ही minimum हो जाएगा ना. Cool. नहीं ना, देखो आप सिंपल सिंपल सी बात सोचो. अगर मैं दोनों टेबल में x बोल रहा हूँ, दोनों टेबल में y बोल रहा हूँ, सो इन बोथ द केसेस एनीवे टुगेदर में अगर मैं बात करूँ तो वो तो लॉजिकली फिट बैठ रहा है ना. अगर आप x और y की भी बात करो फॉर टू टेबल्स, फॉर माई x एंड द y, सो इन दिस केस अगर आप एंड बोल रहे हो तो आप लॉजिकली दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग. बिकॉज हियर x जो है आपका दोनों रेफरेंस फ्रॉम द टेबल t1 एंड t2 है, एंड इनफैक्ट फॉर द y भी t1 एंड t2 है. So in this case, you are focusing on x, which should not be equal to both the tables. I mean, दोनों टेबल में x सेम नहीं होना चाहिए. Likewise, y, similarly y. So it could be either of those. अगर मेरा x भी अगर इस either of the thing is, अगर वो दोनों में से कोई भी ट्रू करेगा तो वो ज्वाइन कर लेगा ना. क्या दिक्कत है? It's more of a Cartesian product in this case for me. अगर दोनों ही सेम हो जाएगा, अगर आप खुद सोचो, अगर आप एंड कर लोगे तो आपने उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना, उसके लॉजिक को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. What after 31st Jan? To be honest, CodeBeyond channel पे live sessions नहीं होंगे. So there will not be live sessions on CodeBeyond channel. That's what I have got the info. But again, I'm not the right person to talk about this. But I believe post 31st Jan, there will not be any live classes on CodeBeyond. But we'll see. We'll see. Hey, videos will be still available, guys, so do not worry. So they will not take down the channel as such. Take down मतलब videos गायब नहीं हो जाएंगे, but videos will still be there. But there will not be any further live classes going for the channel. So the videos will still be there, right? So that's so good to know, guys. But unfortunately, there will not be any live classes on right. So this will not be any live classes on this CodeBeyond channel for 31st. But these videos will still be there, right? So do not worry. So these videos will still be there. You can still go there and watch for your references. But I mean, yeah. So let's see, because there's some operational issues. I mean, which I cannot really comment about. So that's the season which we have also. We were informed like a couple of days back. So that's the thing. So post this, let's see. I mean, let's see. Definitely, I'll be teaching it for sure. But how, when, where, I don't know that for now. So we are still planning it. Even if I make my own channel, so that's gonna take some time, right? So hardly some people know me. So that's not gonna be easy to do that. But let's see. Yeah, I mean, I can obviously do it in other channels. So in fact, yeah, we are still planning it. So I'm still discussing with. Let's see. So I'll inform you guys.
Cool guys. Yeah, it takes a lot of effort, man. See, the thing is, it's not like I'm a proper YouTuber kind of a person, right? It's more like I'm doing it out of my interest, to be honest. Okay, so I don't have my own personal channels, and thank you, Divya, for sharing that. I mean, I would love to talk about this. So maybe we can talk on LinkedIn on a DM message, so we can talk about that. But again, for sure, definitely. I mean, that's the objective of my thing. I don't own a YouTube channel or such, so I don't have any for me, right? So it's more like I do it out of my own interest. I like teaching, so I feel that whatever I have learned from my friends, yeah, to be honest. सीक्वल तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे पढ़ाया एंड आई हैव टोल्ड यू इन माय इनिशियल क्लासेस आल्सो राइट आई वाज रियली बैड इन सीक्वल एक्चुअली मेक there's a good friend of mine who taught this in my college days, right? And I still owe him big time. So this is how I have done, and I feel that the it should be shared, right? So this is why I'm here. So, but the thing is, again, because this channel is going down, so we will not be going live anymore on this channel. Let's see. I mean, definitely, even I am discussing on this, so I'm trying to figure out. So we'll see how we can do that. LinkedIn profile. I mean, you can search my name, Arpit Jain. To be honest, I cannot share it. To be honest, that's confidential as per the channel contract. But still, I mean, you can search my name. I mean, it's pretty much visible. Yeah, I mean, hardly a thing, right? You can still find my name, Arpit Jain. Right? Okay, look for Arpit Jain IT Madras. You should be able to find me. Uh, cool. So great, guys. I mean, that's about it. So that's the sad news. But again, that's how things are, right? So I mean, even I'm pretty sad. I mean, yeah. I mean, I like doing this. I take out time specifically for this out of the schedule, which I generally go through, because I really like doing this. And yeah, but ठीक है. I mean, there's no other point. We'll see. I mean, we'll see. I mean, that's what I'm saying, right? So I'm still discussing what are possibilities we have. So where I can teach, what I can teach, how I can teach. I'm still discussing that. So allow me like a couple of days time. So maybe by this week I should be having more credit, because anyway from next week, next weekend onwards, there will not be any live classes anyway on the Code Beyond, right? So I have to sort it out before that. So I'll come to you. So I'll definitely do that. Great, thank you so much for the good words, guys. And as always, let's discuss. Maybe you also suggest me what should I do. I'm out of options, to be honest. So we'll see. I mean, I'm still trying to figure out how we can do that. No, I'm not in Qualcomm, Chandra. Job terming, again, it's pretty personal question. So let's not comment on that, Prashant. Let's not comment on this live channel anyway. Uh, okay, so I think that's about it, guys. So I think anyway, so we'll be meeting tomorrow again for the SQL query. So let's try to solve a few more questions tomorrow. So and then we'll see how we can take it forward, the questions, and then let's see. I mean, I'm still also planning that, and I'll come to know. So definitely, I mean, you guys can see that. यार इंटर्नशिप दिलवा दो ओके, अगर मेरी कंपनी होती तो मैं दे देता यार, मेरी खुद की कंपनी तो है नहीं. एंड इंटर्नशिप दिलवा दो, अगर आप ऐसे बोलोगे तो कोई भी जॉब नहीं देगा आपको. जीरो टू प्रो, माई चैनल नेम जीरो टू प्रो. ओके, मैं ढूंढता हूँ क्या यार. ट्राई टू फाइंड आउट, है ना. विल सी दैट. Did you submit the question? No, I did not submit the question. Let me submit that. Yeah, I submitted it now. Okay, 0 to Pro, I'll check that. So we'll see what is it. Cool, guys. I'm not able to actually find this channel, to be honest. 0 to Pro, but okay, we'll see. Okay, so how can we do that, guys? Again, give me 0 in yellow, Pro in red. What exactly this is? It won't. Anyway, yeah, it's cool, guys. So I'll try to figure out. So, and you are Divya, I think. Divya Pandey, you are in Wipro, is it? So I'll check you. Yeah, so we'll see that.
Cool guys, take care. Thank you so much guys. So I'm gonna give your evening back, so you can just I mean it's anyway midnight, so relax, enjoy, and let's meet tomorrow again, same time, 9:30 p.m. So mostly it's gonna be 9, but I got occupied some time for a bit today, so I extended to 9:30. But anyway, so it's tomorrow 9 p.m. So we're gonna meet tomorrow for the rest of the questions. So we'll be doing that on Leetcode. Okay, so see you guys. See you tomorrow. Bye bye. Good night.